to escort our today's dignitaries, CA Manish Gadia, past chairman WIRC, on the dais. CA Deepak Thakkar, sir. With CA Bishan Sir, sir. Chairman of Indirect Tax Committee. With this, may I request everyone to rise for our ICAI motto. Yaesha supteshu jagrati. Yaesha supteshu jagrati. Kamam 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 pursho nirvimanaha tadeva shukram tad brahma tadeva amritamuchyate tasmin lokaha shataha Sarve tadunatyati kaschan etadvaita Thank you. So friends, at WIRC, we, under the dynamic chairmanship of CA Ketan Sayya sir, we have curated, and along with 21 regional council members, we have curated n number of events and number of programs. Request all of you to go through website and take active participation in forthcoming events. With this, may I request Indirect Tax Chairman CA Bishan Shah sir to come and address us. So thank you very much, Jinal ma'am. Big thank you and a round of applause to our chairman of WIRC, CA Ketan Sayya sir, for giving us this an opportunity to have a different type of programs for our members. Again, we are thankful to Manish Gadia sir for giving us this wonderfully crafted program of mock search along with Deepak Thakkar sir, and Vice Chairman of the WIRC, Piyush Bhai, Secretary ma'am, Jinal madam, Treasurer Fenil Bhai for being here, and all the participants who have registered in the large number for this unique program. As we all are aware that so far as the GST is concerned, search is going to happen more and more, and we need to abreast ourselves so far as how we should address when client call us for any search proceedings at their places. Because as I experienced in my first search in the service tax in Ahmedabad, you know, they took a pressure tactics for getting confession of the clients, and how we can, you know, be value added person at the time of search to the client is more relevant, because it is not that you have to just, you know, oppose or you say कि ये आपको नहीं मिलेगा. You need to work at that time very wisely and in the best interest of the client or a taxpayer. So again, we are thankful, Manish Bhai, that you have crafted this, and your all team members. I request Chairman sir also that under his team we should try to take this program on in all the branches of the WRC. With these words,
I'm again thankful to all the members and the chairman, sir. Thank you very much. Thank you, Bishan Bhai, for setting the tone right. And friends, this committee is doing wonderful job. We are having one help desk. We are having study group of GST where all experts and all the professionals are, being part of that study group. I request everyone to, just all the details are there on the website. With this, may I request our dynamic chairman, CA Ketan Sayya sir, to give us the opening remarks. Thank you, General Madam. Respected past chairman of Western India Regional Council, Manish Bhai, the learned Deepak Bhai, on the dais and off the dais, all other people doing an act in this mock search. Learned members, it's indeed a pleasure to address all of you in this unique program of mock search. In the earlier council term, we had a residential refresher course at Alibag. And there the first time this entire mock search was curated under the guidance of then Secretary Gautam Lat, along with the Manish Bhai, Deepak Bhai and all of them. And this was then being played at various places in Mumbai, and then I thought that it is a high time that we should refresh and have one program at Western India Regional Council also, and that's how I requested Manish Bhai that let's have one mock search. We are also heading towards mock tribunal. I think Bishan Bhai, Rajesh Agarwal, our Vice Chairman of Indirect Tax Committee, they are working, taking advice of Manish Bhai, they are working on some program wherein, some tribunal related act also we will have in future. We at WIRC, we are working very, very committed for the small and medium-sized practitioner, and that's where this initiative of help desk, named as Samvad Vishwaska, is there in place. I'm very happy to tell you that first we did it in the month of March, 28 March we did, and almost 40 plus queries were there. And thereafter 2 more help desks have been performed. Any member who wants to solve his queries can send an email to WIRC. We will refer it to the experts, and experts will give their opinion over the Zoom call. And the other member who wants to learn out of the queries of the members, they can also join free of cost. So I think a fantastic program being curated by the Indirect Tax Committee, being led by our learned Bishan Bhai, who himself is an expert on GST and past chairman of Ahmedabad branch. I'm very fortunate to have a very, very strong team of office bearer and regional council member, wherein 13 of my regional council members are past chairman of branches, and they bring a lot of experience to the table. And that's how we are able to perform at regional council, and we come up with the various initiative, but one initiative which is there for the people who are practicing in GST is Nyay Setu. There have been incidents even in GST where the member without any fault were arrested and put behind the bar. Once we were visiting Ahmednagar branch in last term, and we saw one chartered accountant being arrested. We have seen incident in North India also, where because of some fraud being done by the client, a chartered accountant is arrested without fault. And members were continuously requesting that we at ICI, we at the regional council, we should help them out. So here is Nyay Setu, wherein we have requested at the first level members who are having legal knowledge, who are practicing in legal areas, to volunteer. And I'm very happy to tell you that almost 132 such volunteers have come forward to work upon Nyay Setu, and henceforth we will be further announcing the modalities of Nyay Setu. So suppose anybody is receiving such show cause, such arrest warrant, can contact the help desk of Nyay Setu, and Nyay Setu will immediately support in terms of giving first response. We'll also require, then we will have the legal experts who will do the drafting for you, who will respond. Of course, the genuinity of the member has to be there. That is the first and foremost requirement. Be it, an inquiry from serious fraud investigation, be it an inquiry from ED, be it an inquiry from GST department or any other places. The Western India Regional Council will support you in terms of those legal complications so that in no time
we all are together and we support each other and help the members who have no fault in such cases, and without their any fault, they are being, questioned, they are being harassed, and they are being, put behind the bar. So we are committed at WIRC to support all our genuine members, and we are with them. My request to all of you is that please look at the Western India Regional Council website. There are n number of the program which we are having. We intend that this year we will be extensively supporting the small and medium-sized practitioners, be it help desk on GST, be it help desk on income tax. We already conducted a help desk on bank audit. We are having an help desk on international tax soon. We will be announcing. These are all free of cost program. No charges are taken anywhere. Apart from the seminars, conferences which we are doing, we are coming up with various publications. 2 publications are already launched. Those were on bank audit. 2 more are in pipeline. In the coming next 2 months, you will see 2 more publications coming with, which are relevant for the small and medium-sized practitioner. Yesterday, today, and tomorrow, we have committee meeting where entire year's plans are chalked out, and the committee is deliberating upon the various areas in which WIRC should function, be it publication, be it program, be it workshop, be it some unique program like this. I'm open for suggestion. My entire team is working on based on the suggestions and the feedback which we are receiving from the member. So request all of you to please give us valuable suggestion and feedback for the better functioning of the council. Manish Bhai is one such person. Probably in 2 months, if I would have called any past chairman for the guidance, I think it is Manish Bhai to whom I must have called up maximum time, be it midnight, 12 o'clock, he has received my call. So personally, Manish Bhai, I am really thankful to you for always properly guiding and supporting despite of his busy schedule. One such past chairman upon whom I can bank and I can get a balanced view, neutral view, and I sincerely place on record my sincere thanks to Manish Bhai for always being guide to me. With this, once again, welcoming all of you to this unique program, and I congratulate the Indirect Tax Committee and the people who are acting on this program for a unique, and I'm sure you will have a unique evening today and you will enjoy this entire program of mock search. Thank you so much. Over to you, Jinal. Thank you, Chairman Sir. As rightly said by Chairman Sir, this is a unique and innovative program of mock search under GST. So let us, now have a formal introduction of our respected role players and seniors in the profession. So may I request CA Dr. Fenil Shah, our treasurer, sir, to come forward and introduce our today's role players. Hello. Thank you, Jinal Van. And before I just start the formal introduction of all the speakers, I would just say that Chairman just shared, I can say 1% of his vision and even less than 1% of the activities which he has planned out for the whole of the year. So I would request that as and when you get time to just vet the website of WIRC, please vet it. And there are many initiatives which are being planned by our visionary and humble chairman. So now I take an immense pleasure to introduce the curator of this particular event, an eminent and visionary past chairman, CA Manish Gadia ji. He is a leader and he is a academician also. He is, you can say, practicing since 1997 in the firm named Messrs. JMG and Company Chartered Accountants. He is an author. He is a speaker at more than 700 sessions, and he is also an influencer, right? Having very pivotal role. And just this brief introduction against his very magnanimous personality. So I would request Chairman Sir and Vice Chairman Sir to facilitate with a token of appreciation with a memento to our curator of this program, CA Manish Gadia ji. Thank you, sir. I again take a pleasure to introduce the veteran of this particular field, CA Deepak Thakkar ji. He is practicing since 1984 in a firm named Deepak H. Thakkar Associates at Mumbai. He is focusing mainly on indirect taxes with a wide range of more services like assurance, transaction and risk advisory.
very important, he stood first in BCom in the NM College of Mumbai, and rest, you can say, lot many attributes to his Bali. Moreover, he has co-authored many publications, presented papers at various organizations, and also contributed to various subjects in GST review, CTC and BCS publication. Again, a veteran on webinars, lectures, presentation, and also visiting faculty at various departments of government also. So again, I would request the chairman and vice chairman of the of WIRC to present, as a token of appreciation, a memento to Deepak sir. Thank you, sir. The third speaker for the evening is distinguished CA Sumit Jhunjhunwala ji. His core area of practice is indirect taxation. He is serving to corporates, MNCs, government entities, and trust, etc. Apart from mainly in GST into advisory and transaction structuring, also representing in quasi-tribunal authorities into due diligence. Again, a contributor to various organizations. Again, an author and an altruist who is giving his services to the Indirect Tax Committee, to GST Committee of WIRC also, and also a member of corporate and allied laws committees at various other organizations. So would again request CA Sumit ji to come up on the dais, and would request the chairman and vice chairman to felicitate Sumit ji. And Sumit ji is the script writer of this particular mock search. The next is the renowned personality CA Dhiraj Terawakar ji. He's a MCom. He's practicing in the field of indirect taxation since 2013. The first rank holder in all the very distinguished first rank holder in all the standards, from standard first to BCom. And he has also presented various lectures and presentations at WIRC and various CP study circles of ICI. And again, he is providing his advisory, compliance, and litigation support in the field of GST. And again, his profile also goes into running into pages. So I would again request CA Dhiraj ji to come up on the dais, and would request again the chairman and vice chairman to felicitate sir. The next is the accomplished lady, CA Bijal Doshi ma'am. As far as academic qualifications are concerned, she is CA CS LLB, and also a licentiate member of ICSI. Okay, she is practicing as a chartered accountant in the firm named BRD and Associates since 2018. And again, she has delivered lectures at various associations. She has acted as a group leader at the RRCs being conducted. Again, an author and an influencer in the field. So would request CA Bijal Doshi ma'am to come up on the dais. And I would again request chairman and vice chairman of WIRC to felicitate her. Thank you. Last but not the least, we have with us the next speaker, influential CA Aalok Mehta ji. He has a wide experience of 20 years in the field of taxation, project finance, and audit. He is presently holding the position of president at the Foundation for Skills Development. He is also a panel member at the Taxation Committee of Federation of Association of Maharashtra. He is also serving as an industry advisory board member at D.Y. Patil University School of Law. Also a panel member at the Registrar of Maharashtra Cooperative Society. And again, the things goes run into pages. Again, an author, an influencer, and also a speaker at various forums. So would request
Aalok ji to come up on the dais, and would request again the chairman and vice chairman to present a memento to sir. Would also like to welcome MP Reddy ji to come up on the dais, and would request again, and also would request Himanshu ji and Nirali Shah to again, all of three to come up on the dais, and would request chairman sir to felicitate. Everybody, I request, be there. We have one photo. Dhiraj sir, Aalok sir, please come. Dhiraj sir. Manish bhai. Yeah. Good evening, everybody. I think some persons can come forward. Empty seats are there, and you will enjoy. This is like a drama. You will enjoy more from the front seats. Right? Please come forward. Come. Yeah, thank you. Hello. Hello.
Friends, the first session of this type we had organized at Alibag in October 23 in a conference of WRC. Thereafter, we moved across Mumbai, Navi Mumbai, Thane, Vasai, and also at a regional conference which was held at NESCO, where 4,000 members were present. We have also done this particular session at Delhi, Goa, and Surat. This is the 28th session on mock GST search. I welcome to the distinguished audience. In our search drama, all characters, names, and events are fictitious. Any resemblance to a person or a situation is purely coincidental. There is no intention to disrespect any person or the position. The script is with some humor, but for education. The story of this event is fictional. The company is Honest Limited, which is engaged in manufacturing of iron and steel and registered under the GST in Maharashtra state. This company is headed by its managing director, Mr. Shailendra, with his support staff, the CFO and tax head, Mr. Aalok. This company, Honest Limited, is raided by the GST investigation team, and the team consists of intelligence officers Dhiraj and Bijal. The senior intelligence officer is Mr. Sumit. This team is led by myself, Deepak, Deputy Director. The session is in two parts. The first part is the search drama for almost 50 to 60 minutes. Thereafter, we will have discussion about the lapses made by the businessman team, the care which has to be taken by businessman team, and even on the part of the investigation team. Then we'll also take up the questions. This event is produced by WIRC and misdirected by artists themselves. So friends, दिल और मन थाम के बैठिए, गौर से सुनिए, दिल और मन थाम के बैठिए, पर दिमाग और आंखें खुली रखिए. पेश है मॉक इन्वेस्टिगेशन यानी कि सर्च ड्रामा. चेक खोलो. गुड मॉर्निंग दीपक सर. Yes, Sumit, good morning. सर एक कंपनी के अगेंस्ट टिप आई है. वी नीड टू कंडक्ट अ रेड एट द लोकेशन. अच्छा, कहाँ पर? सर यहीं पे है, पास में बैंड्रा में ही है ऑफिस उनका. ओके. कंपनीज नेम इज ऑनेस्ट, बट अच्छा. नाम पे मत जाना सर. अच्छा. ऑनेस्टली सिर्फ टैक्स इवेजन किया है उन्होंने. ओ, क्या काम क्या करते हैं? हाँ, काम क्या टैक्स करते हैं? इवेजन सर. अच्छा, काम ही यही है उनका तो सर. क्या बात है. तो क्या प्लान क्या है? सर प्लान क्या, वहाँ पर जाके बस घुस जाते हैं अंदर, चढ़ जाते हैं उनके सर पे, और क्या. ओके. रिकवरी करेंगे. बट कुछ होमवर्क किया? सर होमवर्क देखो, वहाँ पर एक एम्प्लॉय था, हम्म. अप्रैल में उसने सैलरी इंक्रीज मांगा था 20%. हाँ, हाँ. कंपनी ने दिया नहीं, तो यहाँ पर आके हमारे पास बता के चला गया पूरा डिटेल क्या है. अच्छा अच्छा. उसको हमने थोड़ा बहुत क्रॉस वेरीफाई किया है सर पोर्टल से. तो यू कॉन्फिडेंट? यस, सर कॉन्फिडेंस तो हम लोग लेके आते हैं ना अंदर. बट देखना, मुझे भाई सेंटर से बुलावा आया है. आई मे हैव टू शिफ्ट फ्रॉम हियर टू सेंटर. सर उसके पहले आपको रिकवरी करवा देता हूँ ना ये पूरा. ओके. सो अनदर एक्यूरेट इन योर बुक्स देन. ठीक है, फाइन. तो आप सैंक्शन ले लो. सैंक्शन ले तो ले चाहिए लो. सर. सर टारगेट थोड़ा कम बोलता है वो, सर थोड़ा बढ़ा देते हैं. कितना टारगेट बोल रहे हो? सर मैं 15 CR सोच रहा हूँ.
सर तो 25 करा ही देंगे, बड़े लोग हैं ना सर, वो बड़ा ही टारगेट सोचते अच्छा हैं। अच्छा, हाँ तो टेक केयर एंड टेक सैंक्शन, हाँ टेक सैंक्शन, यस यस। जैन सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक ये सर्च वारंट है कंपनी के अगेंस्ट में, आपके अप्रूवल्स चाहिए थे। अप्रूवल दे देंगे। व्हाट आर द कमिटमेंट गिवन दिस वन? 25। 25 सर, Why don't you we'll increase try this sir, it becomes difficult अभी। Why don't you एक टैक्स increase पे it? जिसके पास जाते सब लोग वही बोलते पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं, इतना तो टैक्स भरते सब, इतना बिजनेस चल रहा है फिर भी बोलते पैसा नहीं। Why don't you go for taking action like arrest, whatever is there? Okay sir, we'll then arrest them if they are not cooperating in the inquiry. If you are available throughout, Yes, because we need a sanction for the I'm arrest. na? always available. Yes, yes, ठीक है sir, fine, fair enough. Yeah. Sir, जीसी सर का तो अप्रूवल आ गया। ओके, क्या कुछ बोल रहे थे? सर वो टारगेट 25। 25 किया? हाँ सर, सच्ची अच्छा। बताऊँ 30 का टारगेट था मेरा, क्या मैंने आपको बात भी है? आधा किया था। अरे गुड गुड, मुझे मालूम है आप लोग सब बढ़ा देते हो बाद में। चलो चलो ठीक है। तो फिर किसको ले रहे हो टीम? ले ले टीम में से ले लेते सर, अपने जो भी बैठे हुए ऑफिस में खाली और क्या। हाँ जरा देख लो, बुला लो। हाँ? बुला लो, देख ले तो। चलो। ओ कालाकोट, धीरज। जय क्या कर रहे हो? जय हिंद सर। बोलो सर, क्या काम करना कर रहे है? हो? बस वही रूटीन सर, फेसबुक व्हाट्सएप सर। बोलो क्या अभी करना तो है? कुछ काम कर यार, बोलो बोलो इतना सर। कलेक्शन कम हो गया जीएसटी का, रेड मारने का, जरा पूरा अपना किट ले लो। सर प्रीवियस मंथ का रिकॉर्ड नहीं देखा जीएसटी कलेक्शन का? अरे वही तो रिकॉर्ड तोड़ने का है, पुराना देखते रहोगे कि फ्यूचर देखो अब आगे। बोलो, मैं किट ले लेता किट ले हूँ। लो और सर। किसको साथ एक में? लेडी ऑफिसर भी ले देते सर। हाँ एक ले लो। हाँ आपके बाजू में बैठते हैं ना लेडी ऑफिसर। हाँ हाँ नए सर, recruit हुए थे। वो यूट्यूब वाली। हाँ बोलो बोलो उनको। ओ बिजल मैडम, सर बुला रहे, देखो। जी सर। क्या करें मैडम आप? सर वो यूट्यूब पे रेड मूवी का ट्रेलर देख। कौन सा, पार्ट 1 की 2? 2 सर। 2। 1 तो देख लिया सर। रेड 3 बनाते चलो। अभी हाँ कहाँ जाना है सर? हाँ चलो ना, अपने को क्या है, शूटिंग पे जा पीछे रहे हैं? पीछे जाने का। और शूटिंग पे जा रहे क्या? हैं क्या? हाँ शूटिंग पे जा रहे हैं क्या? वो दिखाएंगे सब। मैडम चलो ना ठीक है यार। सर। चलो किट ले दे हम पूरा अपना। सुबह से अच्छे से बैठा था मैं, काम पे लगा दिया। चलो मूवी देखते हैं। सर आपने सब ले लिया ना सर? हाँ हाँ, जितना अरे पटकन गया ना रे। चला चला जितना हाथ में लगाओ ले लिया। टैक्स पे ऑफिस बंद हो जाए तब जाएगा क्या भाई? यस सर, चलो यार रेडी। ऑल गुड। ले लिया सब? यस सर। सर एक रास्ते में विटनेस भी उठा लेते किसी को। हाँ किसको लोगे? हाँ ये धीरे संभाल लेता है वो तो हाँ डिपार्टमेंट सर, एक्सपर्ट हो गया मिल ये। जाएंगे वो सर। लास्ट टाइम देखना, वो बहुत बीच में बड़बड़ बड़बड़ कर रहा वो था। थोड़ा पढ़ा लिखा था लास्ट वाला। यंग लेना सर, वो ना वो व्हाट्सएप पे टाइम पास करता रहेगा सर। डन डन, ठीक है सर, चलो। चलो रास्ते में देख, लोकेलिटी में देखेंगे सर, मिल जाएगा। मिल जाएगा रास्ते में मिल जाएगा, उठा दो। सर ठीक से ढूंढना, फिर परेशान करता है। मैडम पेपर ले लिया मैंने, आपने लिया ना आपका? ढूंढो सर विटनेस। हाँ थोड़ा थोड़ा कम पढ़ा लिखा चाहिए ना सर अपने को। हाँ जरा देख लेना। नहीं तो अपनी कोई ज्ञान बांटेगा। हाँ ओ भाई आओ तो, 2 मिनट काम है, चलो इधर आओ। क्या काम कर देता था? अरे डरो मत, सरकारी ऑफिसर हम लोग। सर इंस्टाग्राम देख रहे हैं। अरे आ जाओ आ जाओ। हाँ सरकारी काम पे लेके जा रहे हैं, बाद में हम काम आएंगे आपके। आए तो आप तो एक्सपीरियंस रहे, तो चलो तो अच्छी बात चलो है। चलो चलो आ जाओ, कम परेशान एक्सपीरियंस ड्रॉप। करेंगे इस बार। चलिए। क्या तकलीफ क्या है? गवर्नमेंट का काम में जरा सेवा करने का हम रोज करते हैं। एक कभी आपको मौका मिले तो दे दो गवर्नमेंट को टाइम भी। पैसा आप लोग लेते हो, मुझे क्या मिलता है? बताते, सब बताते हो। चलो देखो, एक जगह पे जा रहे हैं और वहाँ आपको सिर्फ इधर बैठे रहे, उधर भी जाके बैठे रहने का है, कुछ काम नहीं ज्यादा। आधार कार्ड है ना? नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए। है ना आपके पास? है ना आपके घर में? बस बस आइडेंटिफिकेशन है ना भाई? हाँ हाँ सर है। बनवा देंगे सर, नहीं होगा तो। समझा दिया? यस सर। ओके चलो चलो आफ्टर यू सर। यस सर, आफ्टर यू कम। भाई तुम भागना नहीं, उनको आगे साथ में रहना। ऑनेस्ट लिमिटेड, ठीक है। वी आर फ्रॉम जीएसटी डिपार्टमेंट। हाँ हाँ तो इधर किससे मिलना है बोलिए? चलो ये सब आपके बंद MD का करो। आपका आईडी, आपका फोन दीजिए। दिखाया था आईडी आपको, ये देखिए आईडी हमारा। बंद करो, सब बंद करो। आपके कंपनी के एमडी कौन है? कहाँ बैठते हैं? डायरेक्टर्स कहाँ है आपके? कंपनी के एमडी, इंग्लिश में बोल रहा हूँ। एमडी किधर है आपके? मैनेजिंग डायरेक्टर। चलो काम बंद करो, फोन लाओ। चलो ले लो ले ये छोड़ो, इनको कुछ पता नहीं, आगे हल्ला क्यों हो रहा चलो। है? आ जाओ। मालूम नहीं क्या हो रहा क्या है। देख जरा? चंदा मांगने वाला आएंगे, चंदा मांगने कौन है आप? अंदर कैसे आ गए? अरे मैडम इनको बाहर लेके जाओ। अंदर कैसे आए? क्या कर रहे हो? पूजा कर रहे हैं। चंदा चंदा नहीं है हमारे पास, चंदा नहीं है, बाद में चंदा मांगने के लिए। चंदा पूरा तुम्हारा धंधा लेने का आए हम इधर। चंदा मांगने आए। अरे पूजा कर रहे, बैठो जरा, बाहर बंद करो सब।
हो गया बंद पूजा करो। वूजा हो गया, अभी दूजा होगा चलो आपका। फोन वोन साइड में रख दो। कौन है आप में से? सब बिजनेस बंद करो। आप कहाँ से आ रहे हैं पहले? जीएसटी से आए हम, सर्च है आपके यहाँ पर। अरे अभी तो 2 महीने पहले आए थे ना। जाएला हमसे अरे पहले कहाँ से आए थे? अरे 2 महीने पहले तो आए थे और तुम डॉक्यूमेंट लेके गए, सब कुछ करके कौन आके गया? स्टेट वाले आए थे, 2 महीने थे। क्या है तुम्हारे पास, कुछ है? अरे कुछ नहीं किया, वो लेके गए सब कुछ। एविडेंस कुछ नहीं है ना? अरे नहीं है, एविडेंस चल। वो बोले हम लेके जाएंगे। कुछ नहीं, गलत बोल रहे हैं तुम। साइन करो, गलत नहीं है, 2 महीने पहले आए थे। साइन करो, साइन करो। अरे अभी लेकिन ये सर्च क्यों कर रहे हैं? शैलेंद्र जी कौन है? शैलेंद्र जी ये है ना? 2 महीने पहले आए थे ना। आपके पास उनका सर्च वारंट कॉपी है? आपका वो कुछ है क्या आपके पास? सर्च वारंट कॉपी है? अरे वो सब लेके गए, वारंट तो कभी सब लेके गए। पंचनामा कॉपी है? अरे सब बोले लेके गए अभी। शो कॉज नोटिस है? अरे कुछ नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, चलिए साइन आए कीजिए थे आप। भाई। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? कोई अरे नहीं है, लेकिन सर्च क्यों कर रहे हैं सर? अभी तो फिगर आया 2.37 करोड़ का टारगेट आपने अचीव किया है महीने का। कितना करेंगे आप? सुमित बताओ। हम लोग रेगुलर सर्च में था तभी इतना रिकवरी हुआ है, नहीं तो आप क्या लोग तो सर्च अभी भी से 1 लाख रिकवरी करेंगे? तो आप लोग ऐसे ही भरेंगे क्या ऐसे करेंगे कर हम? रहे हैं। चलो साइन करो, साइन करो। ये डीन नंबर है क्या? डीन नंबर हाँ चलो चेक करो, डीन नंबर चेक करो। और सब आदम चेक सब बाद में चेक करना, बंद करना सर फटाफट। डीन नंबर साइन करो। मोबाइल लाओ, चलो काम बंद करो। बंद करो, लैपटॉप बंद करो, चेक करो ये। आप लोग Yes, yes. आपका आईडी कार्ड Yes, sir. सब दिखा दे मैडम को बात। यस सर। हमको भी तो दिखा। नहीं मैडम को वेरिफिकेशन एक ही जगह पे होता हमारा। अरे सब Entrance चेक करो, पे। कुछ रह नहीं मैडम कौन है? जाए। अच्छा, हाँ, ठीक पूरा है, ठीक है। डॉक्यूमेंट मैडम ने सब देखा देखा आईडी सब कार्ड देखा ड्रॉअर और आपका। चेक कर लेना। विटनेस देखा है ना? ये सेम फेस है, सेम फेस है। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका आईडी दिखाओ। आप कौन है यहाँ पर? मैं तो इनका टैक्स का मैनेजर हूँ सर। आपका आईडी दिखाओ। मैं कुछ हूँ ही नहीं यहाँ पे। नहीं हो वहाँ पे बैठो फिर। नहीं नहीं, ऐसा तो हूँ हमारा मैं। आईडी मांग रहे हो आप? अरे तुम्हारा कार्ड दे देना। हाँ देख कार्ड। क्या रे? आज देखे नहीं, कार्ड ही नहीं आया। आधार कार्ड तेरा विजिटिंग कार्ड है ना? आधार कार्ड विजय, नहीं है। इनके घर पे भी एक सर्च वारंट इशू सॉरी करो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बैठा रहता आधार हूँ। कार्ड दीजिए आपका। नहीं वारंट रेडी है। आधार कार्ड घर पे, अभी कहाँ से आधार कार्ड दूँ भाई? पैन कार्ड दीजिए। बैठो, घर पे देखो रहता जरा है मैडम। सब। क्या अभी सब मोबाइल में डिजी लॉकर नहीं है किसी को क्या? फोन नहीं, वोन वो मत कर। मोबाइल ही खराब हो गया मैडम, नया सर मोबाइल लेके क्या क्या लोग मोदी का सुनते नहीं है? डिजिटल मैडम तब तक सर्च कर लीजिए ऑफिस में क्या क्या पेपर्स मिलते हैं। हाँ सर। सारे अरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रिसेप्शन यूज पे कर कौन लीजिए। बैठा है? हाँ, वो कौन बैठा है रिसेप्शन पे? ये कौन है? ये विटनेस है विटनेस। क्या नाम है इसका? तो ये हाँ ये तो नाम क्या है आपका? हमने भी नहीं पूछा तो। आपको ही नहीं मालूम नाम है उनका? क्या नाम है? अरे वो इसको हम किधर जान देखा हुआ है पहचान ना? लेके नहीं आते। बाजू वाला टपरी में चाय बेचता है, इसका ये चाय वाला है। अरे चाय वाला है। ये चाय वाले वो कहाँ से लेके आया? आप ऐसा मत बोलिए। अरे तुम तो पढ़ा लिखा है पर तू चाय कर रहा है ना? ठीक है, ठीक है। तो चाय के टपरी पे क्यों बैठा रहता है फिर? ये का उसमें का ICA में जा, WIC में जा, पढ़ाई कर। सर फाउंडेशन दे रहा है, अभी बाद में जॉब लगेगी ना अच्छी। चलो आप आपका काम करो। आप ये चलो। बताइए। सर email ये पास- देखो सर, लाल डायरी मिला इनके ड्रॉअर में से। डायरी मिला? सर क्या कच्चे के हिसाब है पूरा? अरे इसमें हाँ, सब ये- हिसाब लिखा है। दिखाओ कितना देखो बताओ? देखो। दिखाओ दिखाओ। नहीं अपना सर ये डायरी भी भाई। मिला है ये सर। डायरी अपना थोड़ी। अरे मैडम ऐसा डायरी अपन थोड़ी यूज करते हैं। ऐसे ही यूज करते हैं ना, यहाँ का ये है। नहीं नहीं, हमारा डायरी नहीं है। नहीं ये हमारा डायरी नहीं है, राइटिंग भी हमारा नहीं है। अरे ये मैडम, ऑफिस किसका है? ऑफिस हमारा है। तो यहाँ जो मिला आपका ही है फिर वो। नहीं, ये अरे ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही होता है। देखिए देखिए भाई, देखिए नहीं, हमारा ये नहीं है। डायरी हमारा नहीं है, बराबर है। आपका आधार दीजिए पहले उनको। नहीं आधार विजल, नहीं, इनका सर्च डायरी वारंट रखो, बनाओ। रखो, डायरी रखो। ये रिकॉर्ड पे ले ले भाई, रिकॉर्ड पे ले ले। सर एक बैग मिला इनके यहाँ से। क्या बैग मिला? सर कैश। कितना? सर शायद 20-25 हो सकता है। आप हाँ? देखो सर। अरे 15 लाख है। इधर लो, इधर लो। अरे 15 लाख है, कल निकाला वही वजन है का ना। बताओ। कल अरे वजन कर लेते सर वो। तो ज्यादा ही है वो सर। गिनने सर अरे 15 लाख है। कैश का विड्रॉल आप किया था गिन के हमारे देखो, पास। 15 लाख है। एंट्री नहीं है। अरे बुक्स में अकाउंटेंट नहीं है ना भाई अभी। तो कब आएगा? अरे दो देखो, महीने का एंट्री नहीं है। 25 लाख है। अरे गिन के देख रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ 15 सर, आ लाख है रे। जाओ आ जाओ, इधर बताता हूँ 25 लाख है। सर क्या या करें? देख 15 लाख है। 15 लाख है, आप देखो ज्यादा नहीं है। एक मिनट, आपका टैली में एंट्री मारिए इसकी। सर 2 महीने से एंट्री नहीं है सर। क्या है, अभी अकाउंटेंट जो है गांव गया है, उसका शादी है, तो कैसे एंट्री पास करेगा? शादी अच्छा, करेगा कि ये एक करेगा? मिनट, 2 महीने से क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर ऐसा जरूरी है पर सर अभी बैंक अकाउंट डिटेल है सर। अनअकाउंटेड से कैश है ये पूरा तो। अच्छा, कैश आपका करवा है? के देते हैं हम लोग, करवा के देते हैं। कैश आपका है? हाँ, कैश उनका है और सर। सर डायरी डायरी आपका नहीं इनका है? नहीं था, कैश इनका है लेकिन एकदम बराबर। नहीं नहीं सर ये देखो, ये भी पर्ची मिला है सर। हाँ, क्या है सर? ये ड्रॉ टेबल के नीचे पड़ा था सर। सर क्या ये है? 5 करोड़ 10 करोड़ लिखा है। क्या है हमारा? अरे कौन सा पर्ची है? दिखा। अरे रिकॉर्ड पे ले, इसको ऐड अरे, कर। पर दिखाओ ऐड कर। दिखाओ रेकॉर्ड पे सब लोग कैश भी ऐड कर देना। सर 25 लाख किया ना आपने? यस 25 लाख मैडम। 25 क्या कर रहे हैं डायरी सब? का क्या है? इनका रिकॉर्ड चेक करो पूरा। अरे इनका धीरज, कुछ भी पर्चा मैं यहाँ निकालने पर दो, check क्या कर अपना ही नहीं, क्या से हमारा कोई prove पर्ची नहीं है। आपका वो- ईमेल चालू कीजिए। वो जादू वाला होगा, उसका पर्ची होगा, वो जादू मारता है ना भाई, तो रह जाएगा। तू कुछ भी हाँ हाँ, वो सब बाद में बताना आप कहाँ कहाँ क्या क्या रखे ये हैं। रहा। सर बैंक का लॉगिन डिटेल्स चाहिए।
सारा बैंक का जीएसटी का नहीं नहीं वो बैंक का तो लॉगिन डिटेल पहले दे पहले सकते हम जीएसटी लोग। पोर्टल का दो। बोलो बोलो का दे दो। जीएसटी पोर्टल का लॉगिन बताओ, वो तो पासवर्ड आपके बताओ। पास- आपके पास वो डेटा है ना भाई ऑलरेडी पासवर्ड। मैडम इनका बनाया क्या मेमो? अरे सर वो नहीं नहीं सॉरी दे नहीं सॉरी रहे सॉरी पैन सॉरी कार्ड। सॉरी फटाफट बोलो फटाफट। जीएसटी पोर्टल का पासवर्ड बताइए। पासवर्ड जो है ना अपने को नहीं देना है, मेरे हिसाब से तो देने की जरूरत नहीं है अपने को। पर आप देखो हमारा पासवर्ड जो है वो फ्लोर 123 है। अरे याद रहता है इसके लिए। अरे फ्लोर 123 का मतलब याद रहता है। फ्रॉड याद रहता है आपको? तो फ्रॉड हर एक को याद रहता है। आपको फ्रॉड ही याद रहता है भाई। साइकोलॉजी बुक पढ़ी थी मैंने, आदमी पासवर्ड वही लगता है जो काम करता है, ये आदमी है फ्रॉड। अरे भाई और वो ईवे बिल का बताओ, ईवे बिल। ईवे बिल का ईवे बिल का फेक 123। सर ये क्या है सर? ये कुछ तो गड़बड़ है सर। ये हमको याद रखने के लिए रहता है ना भाई, फ्रॉड और फेक चेक याद करो, रखने बराबर के लिए। नहीं, ये सब गड़बड़ है सर। सर बैंक अकाउंट चाहिए ना वो ये 25 आदमी लाख पूरा 15 गड़बड़ है लाख। सर। नहीं, नहीं, बैंक अकाउंट बताओ। बैंक का लॉगिन पासवर्ड दे दो। नहीं बैंक का बैंक का लॉगिन लॉगिन पासवर्ड दे दो। ऐसा वो नहीं दे सकते नहीं दे सर। सकते सर। आरबीआई ने बोला है लॉगिन पासवर्ड सब किसके सीज साथ शेयर नहीं करेगा, करना। सब सीज सर, करे। RBI आप के सीज पास करो कार्ड सर, है। आपकी पूरा मर्जी है। तुम्हारा ऑफिस इनको अंदर ही सील डालना कर देंगे हम। सीज कर दो सर, सील कर देंगे ऑफिस। सील कर दो ऐसा नहीं है ना बैंक। सर। आरबीआई ने हमको बोला है यूजर नेम पासवर्ड देने का नहीं, तो वी फॉलो आरबीआई। आपको क्या डिटेल चाहिए वो देंगे। अपडेटेड आदमी से अच्छा बैंक अकाउंट ओपन करो, बैंक अकाउंट ओपन सर करो। ओपन करवाओ और वो आप लॉगिन करवा लो सर, पासवर्ड बताओ, आप लॉगिन करो। हाँ आपको लॉगिन करके दिखा देंगे, हाँ, लेकिन बताओ। आपको पासवर्ड नहीं दे सकते। पासवर्ड नहीं दे सकते सर, लॉगिन आरबीआई करवा ने दो बोला सर। है। हाँ ठीक है चलो ओपन करो बैंक 2 अकाउंट। महीने का एंट्री नहीं है, क्या चेक करें आप? आप पहले अपना पर्सनल ईमेल चालू कीजिए। सर मैंने ईमेल बिजनेस का दिखा दिया, पर्सनल ईमेल में सब मेरा पर्सनल चैट है। वो हमको वेरीफाई करना है कि पर्सनल है बिजनेस है उसमें पर्सनल। नहीं नहीं वो पर्सनल है। अरे बोलना भाई, पर्सनल नहीं दिखा सकते तुम भाई। बता ले सकते हैं कि नहीं? नहीं, मैं पर्सनल दिखा सकते अब हो। ये सीज करके फोरेंसिक भेज के एक्सेस लूं, उसके बाद एविडेंस रिकॉर्ड पे आएगा। ये सब की क्या जरूरत अभी है सिर्फ सर? वेरीफाई करना है मुझे बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। पर्सनल की क्या जरूरत है जब बिजनेस ट्रांजैक्शन है? वेरिफिकेशन करना है। हमको कैसे यकीन होगा कि आपने पर्सनल ईमेल पे नहीं किया कुछ ट्रांजैक्शन? अरे ये तो जरूरत तो नहीं है सर। अभी प्यार से वेरिफिकेशन के लिए मांग रहा हूं मैं। थोड़ा बहुत देना है तो दो, बाकी तो मेरे को लगता नहीं ये सब देने की जरूरत अरे है। तुम देने के नहीं देना है तुमको, या टैक्स हेड किसके लिए रखा है? देख कल हर महीने पगार लेता है, तेरे को कुछ मालूम नहीं है? 2 महीने का पगार बाकी है सर, जरा देख लेना। चलो भाई दे दो, जरा दे दो, पर्सनल ईमेल आईडी दो ज्यादा। वो आपने लास्ट टाइम बोला होगा पगार के लिए उसको देना है कि नहीं देना अरे सोचता देखो, हूं। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए अपने को। मैं- फिर भी आप देखो सर, आप कॉल ले मैं लो फोरेंसिक इसके में ऊपर। भेजता हूं लैपटॉप पे, बोलिए एविडेंस रिकॉर्ड पे आ जाएगा। सर फॉरेंसिक की क्या जरूरत है? जीएसटी मैं तो बोला प्यार से वेरिफिकेशन करना है मुझे तो। ठीक है डाल देता हूँ सर, डाल दूँ ना? डाल दो भाई, कुछ होगा तो तेरे को ही- देखा जाएगा। अभी तेरा 2 महीने का पगार बाकी है, याद रखना। 1 साल तक मत देना भाई, क्या करेंगे अभी? अच्छा है एम्प्लॉय पगार के ये बिना काम कौन है? करता मीना कौन है? अरे सर पर्सनल है ना, आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन ही देखना है ना, उतना ही देखो ना। पूछ रहा मैं तो आपसे खाली, अभी तक गया मेल चालू भी नहीं किया मैंने तो, इसलिए आपका नाम अरे बाहर तो से मैं पढ़ रहा आपको हूं। इसीलिए तो आपकी बता रहा हूँ privacy सर। वो respect तो- कर रहा हूं ना मैं। सर मेरा प्राइवेट है, आपको बोला सब पर्सनल है। ये दूसरा लीना, उसकी बहन है मीना की। तो समझी भी बात है। कंफर्म करो भाई आपका क्या है। सर बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं कर रहे, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन देखो खाली। हाँ सर तो बिजनेस मिलना चाहिए ना हमको इसमें। अरे पर्सनल पे बिजनेस कहाँ से मिलेगा आपको? आपको बोला सब अच्छा, पर्सनल आप है। क्या देखते हो आप सर? समझते नहीं हो, बाद में ये 8 to 8 का दूसरा बिजनेस है इनका। अरे कोई बिजनेस नहीं है सर, मैं टेक एडवाइजर हूँ, कब से मैं इसके साथ हूँ, कोई बिजनेस नहीं है सर। आप परेशान मत करो किसी को भी ऐसा। अभी सर, परेशान आप- किया हमने आपको? ये पैसा परेशान भरने को किया हमने तैयार आपको हो? अभी? सॉरी भाई, सॉरी भरते हो पैसा? बोलो सॉरी भाई। कितना हो रहा है अभी टोटल अभी तक? अरे कुछ भी नहीं निकला सर, खाली टोटल अरे पैसा भरो। बताते क्या हैं। आप बात कर रहे हैं 30 सर? भरो, अभी खत्म करो। क्या 30 रुपया? 30 रुपये कहाँ से 30 भरेंगे? 30 रुपया, 30 रुपए के लिए यहाँ पर आएंगे, उससे तो हम लोग का कन्वेंस हो जाता तो है। आपने बोला 30 भरो। 30 CR, आप अपने टैक्स पे सब सोचो। आप honest 30 लोग हो। CR सर टर्नओवर नहीं है, 30 CR किधर से भरेंगे? 30 CR पूरे लाइफ टाइम का भरे क्या? नहीं वो आपके लेवल का नहीं है, इनके लिए पूछ रहा हूँ। ये MD है ना, इनको पता रहेगा। आप नहीं भरोगे, हमको मालूम है। आप काम टैक्स करने वाले दे, आदमी काम हो। करने दे। आप कम कराओगे, प्लानिंग कराओगे। सर सर हो गया ना, सब पर्सनल है, इसमें क्या अंदर देखेंगे आप बताओ? ज्यादा कुछ तो है नहीं, तो साइड बाय साइड घर पे भी चालू रखते हैं। आप लोग यहाँ पर करो, एक टीम लेके मैं घर पे जाता हूँ। सर घर पे नहीं जा सकते ना आप, घर पे कैसे जाओगे? अच्छा यहाँ और कुछ मिल रहा है? अरे जीएसटी का सर्च है ना, इनकम टैक्स थोड़ी है। इनकम टैक्स थोड़ी सर। इनका एड्रेस लिया घर का, नहीं, इनके घर पे भी भेजो नहीं टीम। मेरे घर बंद है सर इनको मैं- लेके ही साथ में जाना नहीं, पड़ेगा, सर, वो दे ही नहीं रहे कुछ सर मैं document। रहता ही हूँ यहाँ पे। शैलेंद्र जी घर चलते, वहाँ पर शांति सर्च कर लेते नहीं नहीं सर, घर का तो सर्च वारंट भी नहीं है, घर पे थोड़ी सर्च हो सकता है। सर्च वारंट ये देखिए, क्या है ये? ये घर का एड्रेस आपका नहीं है? ये देखो मेरे घर का एड्रेस है क्या? GST पोर्टल से लिया हमने, तो वहाँ पर आधार कार्ड मांगते हैं, इसलिए हम आपका रजिस्ट्रेशन टाइम पे। आपके ये घर का बराबर है? बराबर है आपके घर का जा ही है। सकता है? सर
लीगली सर ये इनकम टैक्स सर्च नहीं है। मैं 2 ऑप्शन देता हूँ। चले जाओ आपकी भाई। वाइफ डायरेक्टर है कंपनी में, उनको बुला के एविडेंस दिखाता हूँ अभी क्या लीना मीना शीना था। नहीं चलो चलो घर पे चलो। चलते हैं। नहीं पे चलो जाओ ना भाई, ये और गड़बड़ करेगा। तुम आप घर पे जाओ, मैं संभालता हूँ यहाँ पे, टेंशन मत लो आप, मैं हूँ यहाँ पे। तुम ज्यादा कुछ बोलना मत। नहीं मैं बोलता ही नहीं हूँ सर, आप जाओ, आप जाओ। चलो बराबर लेके जाओ और सब दिखाओ बराबर अंदर। अरे धीरज, हाँ सर। एक काम करो, ये घर जा रहे हैं, आप उनके साथ चले वॉलेट जाओ हमारे साथ रहेगा। ओके सर। और सब चेक करो और एक एक कोना वोना छान मारना। डन सर। हाँ मैडम ये देखो ये इतना सर सब इधर कोना दिखा के है। आपको और डॉक्यूमेंट मुझे ही देखना है ना। थोड़े थोड़े टाइम में आगे का रिपोर्ट करते देखना है। रहना। करते हैं, ठीक है सर। सर आपको कोना वोना क्यों देखना है, डॉक्यूमेंट ही वो चाहिए सब ना। पता चलेगा, सब इनकम पता टैक्स सर्च चलेगा। थोड़ी है। सर घर पे जाना जरूरी है क्या सर? अरे आप बैठो बैठो इधर, मैं पूछ रहा हूँ तुमको। चलो बीजल एक टीम भेजो इनके घर पे, टैक्स हेड के घर पे। चलो ये आपका बताओ एड्रेस सब। लिख के तो आप अभी भिजवाते हैं। सर मैं यहाँ का हूँ ही नहीं सर, मेरा घर ही नहीं है सर, मैं घर ही बेच दिया। तो आपके ऑफिस में ही रहते हो क्या? मैं सर यहीं पे रहता हूँ जहाँ पे है। सर यही से उठाना पड़ेगा फिर इनको। चलो ये सब बताओ मेरे को अभी, सब करो सब, ये शैलेंद्र बैंक जी अकाउंट बताओ सब। कुछ नहीं है सर, आप जहाँ भी जो छुपा बोलो, के बोलो, रखा है पहले बता दो। बोलो। वो कुछ नहीं छुपा के वो रखा है बहुत स्ट्रिक ऑफिसर है, बता रहा हूँ सर। आपको। वी आर ऑनेस्ट। चलो तो अभी बात सब कम कर, निकलना काम ज्यादा पड़ेगा। कर, फटाफट चल। यस सर। आटा चावल जिसका भी बैग है सब वो निकाल बाहर। अरे टूट जाएगा टेबल सर। सर ये देखो ज्वेलरी का बैग है सर। अरे तो घर पे ज्वेलरी नहीं रहेगा क्या? कितना किलो? ये 5 किलो लग रहा है सर। अरे तो स्त्री धन है ना। 500 ग्राम अलाउड है। 10 तरीके धनों के कितनी अरे स्थिति वो आपके इनकम पास? टैक्स का किधर बात कर रहे हैं सर? अभी आप जीएसटी में आए ना, जीएसटी में कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। जीएसटी में किधर लिखा है कि इतना स्त्री धन होना चाहिए? कुछ लिखा है? नहीं तो 0 लिमिट हो गया फिर तो जीएसटी का तो। जीरो थोड़ी हो गया। नहीं नहीं नहीं, ये इतनी स्थिति का धन रखते हैं क्या? एक ही स्त्री है। स्थिति एक ही है ना? और क्या? और ढूंढो, और क्या क्या मिलता है? ये देखो सर यहाँ भी कैश है सर। तो कैश तो घर खर्चे के लिए लगेगा ना। रुको रुको काउंट करता हूँ फिर पता चलेगा कितना घर खर्चा चला रहे हो। तुमको यार काउंट करने नहीं आता। काउंट कितना 15 लाख करेगा? का वजन कर 25 भाई, लाख तू का एक्सपर्ट है। आदमी है, वजन कर। कैश का भी वजन करो। तो और क्या मालूम नहीं किया? 30 है सर देखो। 30,000। 30 लाख। 30,000 बैग का प्राइस नहीं पूछा आपका? तो कैश तो लगता है घर खर्चे के लिए ये सर। घर घर चलाते हो आप 30 लाख में? और क्या? बीकेसी चलेगा इतने में? अरे बीकेसी तो 30 करोड़ में भी नहीं चले सर। ये अंबानी वाला आदमी है ये, और भी ट्रांजैक्शन मिलेंगे। देख सर, लेता कुछ हूँ सर खाएंगे ये साइड पिएंगे? किधर है क्या। हाँ धीरज सर कुछ खाएंगे पिएंगे? हाँ सर भूख तो लगा है सर। चलो तो ये बाबा, समझाओ सर को। तो क्या टाइम पास करे, फटाफट ढूंढ। फ्रिज में देख, फ्रिज में। सुबह से शाम हो अरे गया। फ्रिज में क्या रखेगा? डॉक्यूमेंट फ्रिज में रखेंगे क्या? अरे कैसा आजकल रखते है? हैं। कैसे कैसे ऑफिसर है? अरे कल ही मूवी देख के फ्रिज में पूरा कैश का स्टोरेज था। अरे कैश रखते हैं, कोई क्या डॉक्यूमेंट थोड़ी रखते हैं। कुछ सर इतना ही है, बाकी तो इतना ही कुछ है? नहीं दिख रहा है। एक काम करो, सर को पूछो, दीपक सर को, दोनों एक बार कॉल करो ना, अभी इसका क्या करना है तब तक मैं इसका इन्वेंट्री कर लेता हूँ। देखो वही inventory कर। बोलेंगे इन्वेंट्री करा लेना। एक्सपीरियंस हो गया तो यार एकदम। अरे इतना रेट मारा है क्या बोलूं। हेलो। हेलो दीपक सर। हाँ बोलो घर बोलो पे ज्वेलरी मिली है गोल्ड एंड डायमंड की, एंड कैश मिला है 30 lakhs। 30 lakhs। यस। और इधर इधर कितना था? इधर तो ऑफिस में 25 था, और बाकी वो जो चिट्ठी में लिखा हुआ था सब वो ब्लैक, वो हवाला का। ओके। अरे वो हमारा चिट्ठी नहीं है सर, आप कुछ भी नहीं बोल नहीं, रहे हैं। हाँ ठीक है आपका ही है। और कुछ बिस्किट्स है? बिस्किट कौन सा है भाई? पाले जी गुड डे सर पूछ रहे। अरे भाई, हाँ अरे बिस्किट यार तू। अच्छा, अरे वो ज्वेलरी वाले बैग में नहीं बिस्किट। कुछ नहीं सर, ये सब पूरा ज्वेलरी है। लैपटॉप क्या है भाई? ऑर्नामेंट है। ये भी सीज कर दो, ये भी सीज करो लैपटॉप। ज्वेलरी बैग में लैपटॉप क्या कर रहा है? सर एक लैपटॉप भी मिला है ज्वेलरी के बैग में। 5 किलो रफली ज्वेलरी है। अच्छा। और 30 लाख कैश है। एक काम कर, वो लैपटॉप और कैश इधर लेके आ। हाँ। और ज्वेलरी का इन्वेंट्री ले लो। ठीक है। हाँ। और ज्वेलरी छोड़ दूं फिर? हाँ ज्वेलरी उधर छोड़ दे, बट इन्वेंट्री ले ले बस। नहीं इन्वेंटरी तो करवा लिया सर। हाँ हाँ, तो फिर तुम आ जाओ, मैंने काफी चीज देखा इधर, ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहा है। हाँ, हाँ, निकलता और- जवाब निकलता अभी वो। इतने उनका आधार issues कार्ड में- मांगो, हर इतने एक बार issues आधार में मांगो नोट तभी किया जवाब है, देते देख वो। अभी। आ जाओ आ जाओ। ठीक है चलो। धीरज यस सर। कैश ले लो और वो लैपटॉप ले लो, ज्वेलरी इनका लॉकर में छोड़ दो। ये लो सर, क्या करूं? कैश आपके हवाले, यहाँ से भी हम ऑफिस में लेके जाएंगे। ठीक है। खाने का तो
कुछ आप मना किया ना खाने का आपने? क्या बात है, क्या टाइम पास चल रहा है खाने पीने का? सुबह से शाम हो गया, समझ में ना नहीं आया? खाता है ना खाने देता है। शादी में गया, शादी में गया, शादी में गया, क्या करेगा? मैडम क्या मिला कि नहीं कुछ? सर बहुत इश्यूज है सर। शराब सुमित आगे आ गया सर। ये देखो, अरे, वहाँ कहाँ लेके जा रहे हो, यहाँ लेके आओ, सर काउंट कराएंगे हम। सर काउंट करेंगे, पहले वाला तो नहीं गिना। क्या मिला भाई? ये लो सर गिनो। क्या मिला है? गिनने का नहीं है, उधर साथ में रखवा दो। रखवा दो, हाँ। ठीक है। ये क्या है सर, हजाम पट्टी करा रहे फुकट खाली में। बैग है, खाली बैग है। तू गोल गोल घुमा, मैं देखता है तेरे को। खाली बैग है। अरे सुमित, काफी इश्यूज मैंने देखे, बट एक काम करना, वो जरा सीसीटीवी वो मैं देख लेता हूँ। सर बैकअप के लिए हार्ड डिस्क लाया क्या? हाँ हार्ड डिस्क लाया बैकअप के लिए? समझ रहा हूँ। वो आपके किट में था ना? क्या कर रहे भाई, हार्ड डिस्क डेटा बैकअप के लिए? अरे मुझे लगा इनके बैग में है तो रहेगा ऑफिस में। मैं क्या बोला था तुमको, सब लिया कि नहीं? मैडम अभी क्या करेगा? क्या कर रहे हैं सर अपने पास है ना सर वो क्या? सीसीटीवी का बैकअप? तो उसका निकाल लेते। अरे फर्स्ट क्लास, क्या आइडिया ए दिया भाई सर। ये क्या कर रहे हो? क्या बोल रहे हैं ये? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो भाई? बताओ क्या कर रहे हो आप लोग? हाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? नहीं क्या कर रहे हो? अच्छे से पूछ रहा हूँ, क्या कर रहे हो? अरे पैसा भर रहे हो क्या तुम? डेटा का बैकअप ले रहे हैं हम लोग। बैकअप वो सीसीटीवी का? अरे लेकिन सीसीटीवी बंद नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सीसीटीवी बंद कर नहीं कर सकते। ए, ए भाई रुक। सीसीटीवी का ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, मेरे पास उसका जजमेंट भी अभी नहीं है पर है। नहीं है। हाँ सुन, सीसीटीवी बंद मत करना, खाली हार्ड डिस्क लेके आ। मतलब क्या हुआ ये, क्या कैसे? अरे डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन है। अरे अलाउ नहीं नहीं सीसीटीवी को स्टॉप नहीं कर सकते, डिपार्टमेंट का इंस्ट्रक्शन है। सीसीटीवी का बटन ऑन रहेगा। नहीं हार्ड डिस्क। ए विटनेस, ये देखो क्या जबरदस्ती कर रहे हैं, कोर्ट का ऑर्डर फॉलो नहीं करे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इन्होंने क्या बोला, सीसीटीवी चालू रहेगा, मैंने बोला सीसीटीवी चालू रहेगा। अरे तो रिकॉर्डिंग किधर होएगा फिर? ये किधर बोला रिकॉर्डिंग करना सुप्रीम कोर्ट ने? तो उसका मतलब तो वही है ना। अरे तू सीए कर रहा है ना, क्या बोल रहा है? आर्टिकल है कि नहीं? बैठ इधर, बैठ इधर, तू बैठ इधर, तू बैठ इधर। कहाँ से लाया सर ये? तुमको सिर्फ देखने गए, हम प्रेशर कर रहे क्या उनको? 5000 जी हम लोग इतने ऐसा विटनेस पकड़ के लाते हैं, ऑनेस्ट लोग हैं हम लोग, ऐसा विटनेस पकड़ के लाते हैं। उसके बाद एक उसके कान के नीचे पड़ेगा ना, वो बराबर याद भी आ जाएगा कि हमने नहीं मारा है। उसको पहले मारो, हम लोग हमको फ्री करो। अरे मैं क्या बोलता हूँ, चीज मैंने देखी है अभी, सब सर क्वेश्चन करो। शाम को 6 बज गए, वो लेडीज को तो जाने दो। 6 बज गए सर, वो कब तक बिठाएंगे उसको? फिर उसको ओवर टाइम देना पड़ता है। बिजल एक काम करो, उसका पर्स वर्स चेक कर लो और कुछ ले नहीं जाए, और उसका सब मोबाइल नंबर और ले लो, वो विटनेस को और भी जाने समझा दो उसको, जब बुलाए तब आ जाए। विटनेस अपना नहीं है ना, फोन तो सीज क्या करो टेंशन उनका, लेता है? फोन सीज कर लो, फोन मत देना। सर फोन तो देना पड़ेगा ना घर पे। हाँ? भाई मैं फोन के बिना बाहर फिर जाके किसी को फोन मत करना, यहाँ पर रेड वेड चालू कुछ भी। आपको कल ऑफिस बुलाएंगे, आपको आना है, किसी को कुछ बोलना नहीं है। कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाना। ठीक है, अभी तेरे को पता चला। पक्का बताओगे ना? बाहर किसी को जाके बताया, आपके घर पे रेड मार दूंगा मैं। कुछ पेपर्स नहीं है ना, किसी को कुछ बताना नहीं है, वरना आपके घर पे रेड मारेंगे। सर का भरोसा नहीं है कुछ। ठीक है आप जाइए। क्या मैडम, आप तो भरोसा करो मेरे पे अभी। सर बोलना पड़ता है सर। सर कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सर। क्या मिले मैडम? मिला है डॉक्यूमेंट सर, ये एक पुराना ब्लैंक स्टैम्प पेपर मिला है सर। ब्लैंक स्टैम्प पेपर? अपनी डील हुई थी ना, उसका होगा। किसके लिए? कौन सा स्टैम्प पेपर है, दिखाओ। ये ऐसा स्टैम्प? अरे उतनी दूर से थोड़ी दिखता है सर। मेरे को तो चश्मा भी है बाहर का। अरे ये वो 2023 का है ना, वो टाइम पे दुबई में ट्रांजैक्शन होने वाला था, वही नहीं, बाद में पार्टी भाग गई। ये एग्रीमेंट तो नहीं दिख रहा है। अरे एग्रीमेंट किधर से होगा, हुआ ही नहीं ना एग्रीमेंट। ट्रांजैक्शन ही नहीं हुआ है भाई, कहाँ है तुम? कैंसिलेशन डीड उसका? अरे एग्रीमेंट होगा तो कैंसिल होगा, कैसे लोग आते हैं यार। एग्रीमेंट देखो, कम्युनिकेशन तो चाहिए ना। ये हवाला में घुमा है पैसा। एज पर द लॉ एग्रीमेंट होगा तो ही कैंसिलेशन होगा ना। अरे सर तो मेल ये रिकॉर्ड पे ले लो, रिकॉर्ड पे ले लो उसको। अरे खाली लाओ, पेपर है भाई, कुछ नहीं है ये। तुम ये क्या पहली बार सर्च करना है क्या? ये पैसा हवाला किया है। अरे कहाँ का हवाला, जब ले डील बराबर। कुछ नहीं हुआ, पैसा ही नहीं है मेरे पास, हमारे पास। आप क्या छोड़ना हमेशा मत। सर दो डेट दिख रहा दो है। डेट दिख रहा है उसमें, वही तो सर। हाँ कौन सी 2 डेट दिख रही है भाई? ये 2001 भी दिख रहा है, 2023 भी दिख रहा है। क्या तुम? अरे वो वेंडर जैसा इशू करेगा, हमारे हाथ में है क्या? आपका ही लोग गवर्नमेंट है। हम है क्या? सर आप ले इनके ही लोग हैं, रिकॉर्ड पे ले ले तू। इनके ही लोग हैं वो स्टैम्प पेपर इशू करने वाले। हम थोड़ी इनके लोग मतलब क्या है? यानी ये गवर्नमेंट बोलना क्या चाहते हो आप हमको? नहीं गवर्नमेंट के लोग गवर्नमेंट हैं। के है ना। नहीं वी आर गवर्नमेंट के हम लोग। सेंट्रल ऑफिस से, सेंट्रल डिपार्टमेंट से, भाई वो होगा। स्टेट का काम है। अरे आप है तो गवर्नमेंट के Government नौकर ना। नहीं उससे कुछ नहीं होता है। पब्लिक सर्वेंट का इंसल्ट कर रहे सर ये। नहीं अरे क्या है इंसल्ट किया? पनिशेबल ऑफेंस सर। क्या बताओ इनको सेक्शन 267। तो
तो आप पब्लिक एक काम करो, कर सकते हो। सर समन्स इशू करता हाँ समझ दे उसको, समझ दे, हाँ, सर। स्पॉट समझ बना, चल डन सर। सर ये दे दो। और इसका भी बना, इसका भी। नहीं मेरा कुछ नहीं है, मैं तो कुछ हुई नहीं। अरे इनका एक बनाओ काम ये। करना, सुन। पहले टैक्स हेड का बनाओ ये। अरे सर मैं मेरे कंसल्टेंट को बुला लेता हूँ। आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, हमारे तो समझ में नहीं आ रहा। ये सब समझ में आ जाएगा। ये है ना आपके कंसल्टेंट ये इधर। consultant सब भी ये बुला रहा है। कंसल्टेंट थोड़ी है, ये ये हमारा तो एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय consultant। में सुमित, एम्प्लॉय में कंसल्टेंट को क्यों बुला रहे हैं? नहीं बुला देना तो क्या करेगा हमारा, बुला के यहाँ पर भी सुन ना, बुला फोन लेंगे, लगा। उसमें क्या, फोन बुला लगा। लेने दो। बुला लूँ ना, हाँ बुला बुला, बाहर लगा। बैठेंगे आराम से। फोन लगा। हेलो सर, ये मनीष जी को फोन लगा रहा है, एक बार आप बात कर लो। फोन उठा नहीं रहे सर, वो नहीं उठा रहे। वापस लगाओ। सर कैसे उठाएंगे, उनको पेमेंट नहीं किया है देखो। सर इसको कैसे बनाओ। पेमेंट नहीं अरे किया? तो सीए को तो वैसे भी 2 साल में पेमेंट करना होता है ना। हाँ वो भी बात बराबर फिर- है। ये रूल 37 का बनाओ, रिवर्सल आईटीसी रिवर्सल इंटरेस्ट लगाओ, नोट करो। ऐड करता नहीं सर। उठा रहे, आप देखो जरा सर। नहीं उठा रहे। एक मिनट ठीक है, थोड़ी देर में हाँ। लगाएंगे फिर। उठा? हेलो, अरे मनीष जी है क्या? अरे वो चाय बाद में पीने दो, यहाँ पे रेट शैलेंद्र भाई के वहाँ पे रेट पड़ी है। हाँ तो जरा उनको बोलो जल्दी आने के लिए। ये डिपार्टमेंट का कोई है, स्टेट सेंटर वाले आए, बहुत परेशान कर रहे हैं भाई। हाँ अरे यार बात करा। वो पहला पैसा क्या बोलते हैं, पहले का बिल दिया नहीं है। अरे उसको बोल दे देंगे ना पैसा, 2 साल अरे, हुआ थोड़ी है अभी। अरे भाई पैसे की बात नहीं करो, लमसम में 4-5 साल के बाद पैसा दे देंगे आपको, टेंशन मत लो। सर ये ऐड हाँ। आईटी से नहीं कॉन्फ्रेंस करना है, मैं तो ऐड अगर कर वो दिया। कॉन्फ्रेंस के लिए चार्ज कर रहा है, मैं आऊँगा कॉन्फ्रेंस का 25,000 रुपया लूँगा। कितना? 30,000 रुपया लूँगा, आधे घंटे का, 15 मिनट का डिपेंडिंग। बहुत महंगा पड़ेगा सर। 30,000 रुपए 1 घंटे का? हाँ आधे घंटा तो बोल रहा है, 1 घंटा खींचेंगे अपन। और सर अरे महंगा आएगा पड़ेगा। तो इनका भरोसा थोड़ी है, तो 5-6 घंटा बिठा देंगे। हाँ, ये लोग तो खुद ही नहीं बैठे बैठना उनको बाद ही, पहले बता दो, हैं? बाद में बोलना 30,000 रुपये लग गया, मैं बैठाऊंगा बाद ही उनको। उसको बोल बाद में बुलाते हैं। हाँ नहीं सर है नहीं, अभी बाद में बात करेंगे। नहीं अभी मत आओ, नहीं मत आओ, मैं बोलूँगा तो बात। 30,000 रुपया पैसा दे दो जो भी है, और ठीक है जाने आप दो। समन साइन कीजिए तब तक। अरे यार ये 10 घंटा बिठा देंगे, 3 लाख रुपया हो जाएगा, हाँ। फिर कौन भरेगा? नहीं वो बराबर ये है। फोन किसका है आपको? शैलेंद्र जी फोन उठाइए, स्पीकर डालिए। अननोन नंबर है। हाँ ये unknown speaker- number। speaker पे रखो। उठाओ उठाओ। हेलो हेलो शैलेंद्र जी। हाँ कौन बोल रहा है? अरे आपका 10 किलो का पार्सल लेके आओ। अरे मेरा कोई पार्सल नहीं है। इधर लिखिए, किधर गया नंबर? नंबर तो वापस लगाओ फोन अरे को। वो सर गलती से डिलीट हो गया। गलती से डिलीट हो गया? हाँ ये इतनी जल्दी गलती होती है? अरे आता नहीं है फोन चलाने, तो क्या करेंगे? सर सीज के फॉरेंसिक भेजो, नंबर रिट्रीव ए, करेंगे। हाँ सर 10 लाख ऐड कर। ऐड कर देता 10 लाख सर। ऐड। क्या 10 किलो अरे बोल 10 रहे हैं? लाख है वो। क्या बोल रहे हैं सर आप? 10 लाख ऐड कर। कर दिया सर। टोटल कितना हो गया? सर एक 22 करोड़ हो गया सर। 22 करोड़? अरे कैश कुछ का भी बात करता figure- है, वो नहीं। अरे कुछ भी फिगर डालते जा रहे हैं। 22 नहीं करोड़ सर, किधर से दूसरा हो भी गया? मैंने अकाउंट में देखा है, वो भी ऐड किया है, वो भी कैश का डिस्कस कितना हुआ? करेंगे। कैश का कैश का टोटल 55 करोड़ हो गया, 55 लाख हो गया। 55 लाख और 10 लाख ये और इन ट्रांजिट। परफेक्ट, वो ऐड कर दिया सर। काय का इन ट्रांजिट होता है भाई ये। 25 ऑफिस, 30 घर पे, 10 इन ट्रांजिट। अरे 10 इनको किलो ही लिखने बोला दे ना। रहे हैं, हाँ, इनकम दिखा। टैक्स का फर्क तू ऐड थोड़ी कर। है। हाँ कर दिया सर, चलन बना दिया मैंने। धीरज वो हाँ, देख सर। लेंगे। तुम्हारा चाचा है ना इनकम टैक्स में? हाँ, हाँ, उनको सर। बुला लो। सगा उनको चाचा। इनकम टैक्स याद आ नहीं रहा है। जाने दो, छोड़ो चाचा को मत बताओ। वो तेरे को ऐसे ही डर अरे तू रहे हैं, समझ उसका बना है कोई ना? चाचा हाँ वाचा- सर, ये समन दे सिलेबस दे है। दिया दे दिया उधर सर। ये लो समन साइन करो। क्या है ये? समन्स है समन्स। ये क्या होता है? ये देख क्या होता है भाई? ये आपके टैक्स रेट बताएंगे, पूछिए, नहीं तो मैं अरे बताता हूँ। भाई ये इंक्वायरी का है, सब इन्फॉर्मेशन देने का, पर क्या जरूरत है सब समन कुछ मिला तो है नहीं आपने। 25 भरते हो? 25 तुम ऐसा बोलोगे 25 सीआर भरो, अभी खत्म करता हूँ मैं, बोलो। भाई, अरे मेरा कोई 25 रिकवरी नहीं है, वी आर ऑनेस्ट यार। लिमिटेड चलो कोई बात सर। नहीं, ये रिकवरी पूरा- नहीं ना, चलो साइन करो फिर। अरे ये सब जरूरी नहीं है सर, साइन ये करो, सब। साइन करो। ये देखो विटनेस, ये मान रहे हैं हम प्रेशर कर रहे हैं क्या कुछ? अरे विटनेस तेरे को 10,000 रुपया इतने देगा। प्यार से ऑफर दिया मैंने, अरे कोई पैसा नहीं देने के। 20% डिस्काउंट दिया इनको। वी आर ऑनेस्ट। ये क्या बोल रहे तेरे को हैं? क्या तुम्हारा विटनेस है भाई, क्या बोलता है? क्या हुआ भाई, तेरे को क्या हुआ? अरे वो अपना रिकवरी छोड़ ना तू यार, समझा तू अपना दे। ध्यान दे ठीक है इधर। साइन कर लो, जो भी है देखा जाएगा। अभी ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। क्या होता है समन मतलब? इन्फॉर्मेशन आपसे सब देंगे, डॉक्यूमेंटेशन सब क्वेश्चन करो, साइन करो। देखो कर दो अभी भाई, फिलहाल ये ना एकदम ईमानदार ऑफिसर है, कुछ खाते ये नहीं लो। हाँ, पैसे का बात करने का नहीं, झगड़ एकदम भड़क जाता है भाई। हाँ शांति से बैठ, तो जैसे बैठे ना वैसे। अभी और 5-10 मिनट का काम है, फिर बाद में रिलीज कर देंगे तेरे को, हाँ, छोड़ देंगे, डोंट वरी। भाई इतना प्यार से क्या समझाता है विटनेस भाई जाएगा तो और किसको लाएंगे फिर? अपना समझ जाएगा, बैठ जाएगा। मारा मारी नहीं करने का, बापू बोला। ये क्या बोला? मैं सीए स्टूडेंट हूँ ना।
सीए फाउंडेशन का कोई कोर्स कर रहा है, आप लोगों को तो मालूम ही नहीं, इनको मालूम है क्या कोर्स कर रहा है। नहीं हमको भी ये मालूम ऐसा नहीं ऐसा पकड़ के लाए अच्छा, तो ये तुम का तो आज लेके एग्जाम चालू हो गया, एग्जाम चालू हो गया, इधर बैठ के आज तो कुछ भी एग्जाम बोल रहा चालू है। है। ये चाय बेचता है। हम मालूम करके लाएंगे तब बोलोगे हमारा खुद का विटनेस है इन हाउस। अच्छा तो लेके आओ। हमने इंडिपेंडेंट लेके आए, हमको भी मालूम नहीं कौन है वो क्या करता है, एकदम हाँ, इंडिपेंडेंस देखते हम independent लेके लोग, आए, इम्पार्शियल। पार्शियल क्या लेके आते हो भाई? देखिए अभी सुमित सेक्शन सुमित 70 कॉन्सेप्ट करो, स्टेटमेंट लेने का ये करो क्या अभी। सेक्शन 70 क्या है? आपको बताता हूँ, आपके टैक्स रेट नहीं बताया, मैं बताता हूँ। दिस इज डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग। अभी जो आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये मजिस्ट्रेट तो judicial- है ही नहीं, हाँ मजिस्ट्रेट किधर है? सेक्शन 70 में लिखा हुआ है द ऑफिसर हु इज गिविंग द समन्स इज अ जुडिशियल ऑफिसर। अच्छा आपके टैक्स रेट ने बताया नहीं आपको। अच्छा, सो यू आर मजिस्ट्रेट? यस। अरेस्ट करूं क्या? क्या अरेस्ट? अरे मजिस्ट्रेट अरेस्ट करते हैं क्या पुलिस अरेस्ट? करूं अरेस्ट करूं पुलिस क्या? वाला ऑर्डर तो करेगा। वो इश्यू करेंगे ना सर। ऑर्डर करेंगे तो अरेस्ट थोड़ी करेंगे। सर कितना ऐसा नहीं लॉ आप सिखा रहे धमकी देते हो अरेस्ट करूं अरेस्ट, ऐसा थोड़ी अरेस्ट करने का है। ऐसा भी इनका नहीं मेमो बनने बना का। दो, आदेश को उठाओ इनको। नहीं छोड़ो छोड़ो, मेरा कुछ करो मत, मैं तो पावर दिखाना चालू करेंगे, मालूम पड़ेगा फिर तुमको। 2 महीने से सैलरी भी दिया नहीं है। चलो ठीक है करो, फिर भी समन दो इतना बोल इनका। रहे हैं आप। आएगा सैलरी का प्रेशर और कुछ नहीं है। सैलरी मिलती Yes, है sir. घर पे प्रेशर पड़ता है ना सर फिर। इनवॉइस करो पे बराबर। इशू है हाँ सर। सर ये पॉइंट है अभी क्या सर, section वो 70 स्टेटमेंट में क्या है ये बता बताओ देते आप। सर, एक एक आता है ना, दिस इस एंटायर सब पॉइंट प्रोसीडिंग निकाला है। जो समन्स का है इज डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ इंडियन पीनल कोड। नाउ रिप्लेस्ड अरे पहले सेक्शन 70 बताओ। अरे बता दो आपको सेक्शन 70 में तो आप 193 क्या बोले सर? हमारे को देशी भाषा में समझाओ। और यहाँ पर सेक्शन 70 में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रू एंड करेक्ट स्टेटमेंट देना। So we are honest. बस आपको वो ऑनेस्टली जवाब देना है, जितना मालूम है उतना ही ना। जितना मालूम है सच सच बताना है। बिल्कुल मैं सच ही कुछ भी बोलता हूँ। गलती से भी गलत बताया तो भी पनिशेबल ऑफेंस है, कुछ बताने से रह गए आपने हाइड किया वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। पूरे हम कुछ प्रोसीडिंग छुपाते में नहीं है। पूरे प्रोसीडिंग में कहीं पे भी इंटरप्शन किया है या इंटेंशनली इंसल्ट किया सर का या कोई भी प्रोसीडिंग ऑफिसर का, वो भी पनिशेबल ऑफेंस है। हमने कोई इंसल्ट किया क्या भाई? वो भाई आपको इंसल्ट किया तो तुम भी जाके इनके ऊपर केस कर। केस हमने करो। तेरा इंसल्ट किया क्या? हमारे पे किसका दोगे? हमारे पे किसका दोगे? बैठ जाओ एकदम आराम से। सर अगली बार मत करना खाना ये बना बता दो सर। इसको, बेचारे को जाना हाँ, होगा। दूसरा हाँ इसको खाना वाना तो खाना बना मंगाओ तो सर, भी ये करो, भी बीमार है आदमी। खाना मेरे को भी इसे थोड़ा खाना चाय बाद पीने में का पता बाद प्रॉब्लम में है क्या यार। सब बाद में चलो चलो सब घर सर से 10 बज गए रात के। काम करो काम बीपी ये ये लो। सब चीजें आ जाती है, आप समझते ये नहीं। बाबा जी का बूटी दो एक, बराबर एकदम ठीक हो अरे जाएगा। काय का बाबा जी का बुद्धि, अरे मस्त एकदम, सब भूख प्यास सब गायब हो जाएगी। क्या ये ये तो- साला गोली खा के जिएगा। नहीं क्या हाथ ही मत आदमी है? लगाओ आप, बाद में बोलेगा हमारे पास 10 का केस कर देंगे तुमको, हमको कुछ नहीं वो नहीं मेरा चाहिए। ही है, उसमें मेरा फिंगरप्रिंट है पहले नहीं से, टेंशन तुम्हारा मत कुछ लो। भरोसा नहीं भाई, हम तो भाई परेशान देखिए। हैं। सर वो स्टेटमेंट हाँ, आप देखो मेरे ना को सर। बताओ सर पुरानी क्या पिक्चर है? देखिए ना आपने, कोर्ट में जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तो वी आर ऑनेस्ट बस ना। वही करना वी आपको। ऑलवेज से ट्रू। Honest। यहाँ पर आपने कोई भी फॉल्स फैब्रिकेटेड मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया या कोई फॉल्स फैब्रिकेटेड मिसलीडिंग एविडेंस दिया है, पनिशेबल ऑफेंस है। टैक्स इवेजन हो ना हो, फॉल्स स्टेटमेंट फॉल्स एविडेंस, सीधा अंदर आप जाएंगे। नहीं वी आर ऑनेस्ट। 7 साल के लिए अंदर जाएंगे आप सीधा, वी आर ऑनेस्ट सर। ठीक है। और ये क्या लिखा है आईपीसी पैसा आईपीसी इसमें? पैसा ये इंडियन पीनल कोड था, अभी चेंज हो गया, भारतीय न्याय संहिता आ गया है। ये क्या है लेकिन अभी आप? सेक्शन अरे 193, आप जीएसटी में आए क्या आईपीसी से आए हैं? दोनों सेक्शन साथ में चलते हैं। अरे कैसे साथ आप में जब चलेंगे? क्रिमिनल एक्ट करेंगे तो साथ में चलेगा, इंडियन पीनल कोड भी साथ में आएगा। जीएसटी और आईजीएसटी तो साथ में नहीं चलता है। हाँ वो अलग तकलीफ है। अरे वो स्टेट अलग बोलता है, अरे सेंट्रल सास अलग हो गए बोलता साथ में चलती है क्या? अरे नहीं चलती है ना। अभी आप है। लोग तो फिर आईपीसी कैसे चलेगा? आएगा वो पड़ोसी है ना, वो बराबर आते चुगली करने के बीच में। अरे सर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हाँ था। स्टेटमेंट आते लेट होता है तो रोज लेट करते हैं। हाँ यार तो अरे 10 बज गए सर, खाने का तो खाने मंगा का देते रोज हैं। सर, हाँ पूरा- यार, पूरा खाने का ब्लड दर। प्रेशर शुगर सब रहता है, इसको भी दो कुछ खाने वो को। बेचारा सुबह से ऐसे ही बैठा है। वो बाजू में चॉकलेट रखी है ना, वो खा लो, हो गया। चलिए आपका नाम डालिए। एक मेरे को भी देना भाई, मेरे को भी जो शुगर का बीमारी है। हाँ ये गोली दो, उससे वो भी ठीक होता है, शुगर भी ठीक होता नहीं है। वो करनी चाहिए, हाँ ये बेहोशी की दवा हो गई। डिपार्टमेंट का हजम नहीं होता है सर उसको। नहीं होता है, चलो अभी चाय पिला के हजम करेंगे। आपका नाम डालिए पहले, नाम फिल कीजिए। आप टाइप करेंगे, लिख के देंगे स्टेटमेंट, बोले पहले। ये टाइप करेगा इसका, फास्ट टाइपिंग करता है ये। लाओ भाई। ले भाई ले टाइप कर फटाफट। यस सर। एक ऐसे दो इनको लिखने को, टाइप करने को। हाँ मेरे बच्चे का तो मैं लेके ही Statement घूमता हूँ किसका है? सर। आपका स्टेटमेंट है ना, हाँ तो आप लिखेंगे या आप टाइप करेंगे, बोलो। अरे लेकिन ऐसे किधर से आ गया सर? स्टेटमेंट देना है कि ऐसे लिखना है? उनसे ऐसे लिखूंगा, आपसे स्टेटमेंट ले रहा हूँ। ये तू ऐसे लिख जा। अरे आपको ऐसे स्टेटमेंट क्या देना है, लिखा इनका अलग से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो। नहीं नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं ना भाई, बस मैं तो कुछ है ही नहीं, कंपनी में स्टेटमेंट कुछ आपका नहीं होता है। ठीक है सर। या तो आप बोलेंगे, हाँ आप मैं लिखेंगे। करूँगा, बोलो मैं टाइप करता हूँ। नाम डालिए आपका। डाला फादर्स शैलेंद्र नेम, हाँ फादर्स नेम डालिए। राजेंद्र अच्छा आपका एज डालिए, डाल दिया। रेसिडेंशियल एड्रेस, डाल दिया। गांव का एड्रेस। नहीं गांव का कोई एड्रेस नहीं है, इधर ही है। यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे? मैं भागूंगा क्यों? पक्का? मैं ऑनेस्टली धंधा कर रहा हूँ। यहीं पे? बिल्कुल। ठीक है चलो, आधार नंबर डालिए।
क्या आधार नंबर दिया ना रजिस्ट्रेशन के टाइम पे? नंबर नहीं लगता पोर्टल आपका पे, proof आधार of- कॉपी जाती है। अरे नहीं, आधार आधार नंबर तो उसमें नंबर सब भी तो आया ना? आया ना हर नहीं, वो जुरिडिक्शन पर जाता है, हम लोग इधर से है ना, इंटेलिजेंस विंग से आधार नंबर डालिए। चला, हमारे घर का एड्रेस तो आधार से निकाल के लाए। वो अलग बात है। पासपोर्ट का भी ले ले, पासपोर्ट भी ले। आप पासपोर्ट नंबर डाल पासपोर्ट नहीं है। पासपोर्ट अरे नहीं है ले ही क्या? पासपोर्ट। इसका भी ले ले, इसका मैं भी तो ले। जाता ही नहीं, बाहर ही नहीं जाता हूँ, घर पे ही बता देता हूँ सर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सैलरी नहीं मिला, क्या करेगा पासपोर्ट लेके? ये ले नेपाल ले। जाने का पैसा नहीं उसके पास, आदमी के पास। ऐसा डाला आधार नंबर। चल मोबाइल नंबर डालिए, डाल दिया। जो फोन उठाओगे वही वाला डालो मोबाइल एक नंबर। ही फोन है सर। पक्का? चलिए, क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? बीकॉम की है, कहाँ से? उस्मानिया यूनिवर्सिटी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है सर? पता नहीं। अरे सर व्हाट्सएप पे बहुत यूनिवर्सिटी चलती है, आपको कुछ पता नहीं है क्या? आप डिपार्टमेंट से आए? आप छोड़ो ना, हमको क्या करने का है। आपका कंपनी डेजिग्नेशन क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर। अच्छा, कितने साल से? जब से कंपनी फॉर्म की है। स्टार्ट से? हाँ। ठीक है। ये पूरा आपको बताया सेक्शन 70, ट्रू एंड करेक्ट स्टेटमेंट देना है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं, कोई फॉल्स एविडेंस नहीं देना है आपको। बिल्कुल सर। कुछ भी ऐसा दिया है पनिशेबल ऑफेंस है। बिल्कुल सर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बता दी है। बिल्कुल। नाउ नोइंग ऑल दीज थिंग्स, आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो भी आप स्टेटमेंट देंगे आपके अगेंस्ट में एज एविडेंस में यूज कर सकते हो आगे फर्दर प्रोसीडिंग में। बिल्कुल। ठीक है, चलिए आपके कंपनी में रोल क्या है, प्रोफाइल क्या है, बताइए आपका। मैं कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। कंपनी का ओवरऑल मैनेजमेंट देखता हूँ, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ज़्यादा डेप्थ में नहीं, ऊपर से। बाकी अकाउंट्स एंड फाइनेंस के लिए इसको रखा हुआ है। तो अकाउंट्स फाइनेंस में जो भी तकलीफ हाँ, रहेगी इनको वो ये पूछना है। बताएगा। ये रिस्पॉन्सिबल है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल तो थोड़ी ना है, बताएगा, हम बताएगा जो भी है। रिस्पॉन्सिबल कौन है दोनों में से, वो बताओ। हम तो हाँ ठीक है, आप पूछिए ना, ये सब चीजें बाद में देखेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आएगी भाई? बताएगा भी। आपकी कंपनी ऑनेस्ट लिमिटेड की एक्टिविटी बताइए, क्या काम करते हैं आप लोग? सर ऑनेस्ट लिमिटेड जो है परचेज और सेल करता है आयरन एंड और मैन्युफैक्चरिंग करता है कास्ट आयरन स्लैब्स, रॉड्स, बार्स। किधर है वो बाहर का डिवीजन? किधर है? मैं उधर ऑडिट विजिट करेगा, किधर है बाहर का डिवीजन? किधर है तुम्हारा? रात को 11 बजे इसको खाली दारू ही चाहिए क्या? वो बाहर का डिवीजन बोला ना, वो बाहर कौन सा बाहर है? अरे कैसे ऑफिसर है यार, देखो जरा क्या कर रहे हैं विटनेस भाई? लोखंड का सलिया। मैं भी चलता हूँ। ये देखो, एक सलिया इसके भी डालो, इसको भी देख सलिया। चलो बाहर के आगे बताइए आप। आयन बार बोलो रे तुम लोग। सुनो, देखा तुमने? तू काम करना तेरा। हाँ सर वही कर। सेक्शन हाँ। एंड हम सप्लाई करते हैं गुड्स B2B, B2C, B2G। B2G क्या है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को देते हैं। कौन सी गवर्नमेंट? अरे गवर्नमेंट मतलब तो कौन सी गवर्नमेंट है? इंडिया में तो एक ही State, गवर्नमेंट है। स्टेट है, सेंट्रल कहाँ पर है? अरे हमारे स्टेट में तो डबल इंजन सरकार है ना, उसको तो एक ही बात है। नहीं तो आप कहाँ पर, मतलब किधर सप्लाई होता है आपका ये? रेलवे। रेलवेज में? हाँ। तो डायरेक्ट रेलवेज को जाता है या वो तो कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं ना। कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं क्या बीच में? क्या तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं कुछ नहीं, कुछ फर्क कुछ नहीं पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता सर, कुछ नहीं, ठेकेदार को देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अरे कुछ नहीं सर, तो ठेकेदार को नहीं ये देना सब चाहिए कॉन्ट्रैक्टर है क्या? सर, कुछ नहीं, आराम से। सर एक आईडी कार्ड मिला है, कोई जोलजाल लिमिटेड इनके नाम का सीईओ है वहाँ पे ये। अच्छा दिखाओ, मैं सीईओ नहीं हूँ। अरे एक मिनट पहले आपके ग्रुप कंपनी नाम तो बताओ, क्या क्या है, कौन कौन सी है ग्रुप कंपनी? सब बताएंगे अभी, आई कार्ड सब तो। ये एक ये झोलजाल एंड कंपनी। अच्छा वही एक है, और बस एक ही? हाँ वो कौन है? बीवी है डायरेक्टर। अच्छा, आप और वाइफ? नहीं बीवी है और मेरा साला है। अच्छा वो है क्या? हाँ। तो उनके नाम पे आप वो करो बिना मेल का? नहीं मैं नहीं करता हूँ, उनका ही धंधा है। अच्छा उनका ही धंधा है। अच्छा मेरा कुछ लेना देना नहीं। क्या काम करते हैं झोलजाल कंपनी है? आप क्या काम करते हो झोलजाल में? ये नहीं मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये तो आपका कार्ड तो बना हुआ इधर। ये कार्ड गलती से छपाया था, फाड़ने को बोला था तुमने, फाड़ा भी नहीं। क्या करते हैं? फाड़ने का था, इसका कुछ है नहीं। आपको स्टेटमेंट देना अलग से, इनका स्टेटमेंट रखो। अरे वो सीईओ में वाइफ का नाम डालने का था, इसने मेरा नाम डाल दिया, इसको फेंकने का है। वाइफ का नाम डालने का ये पूरा बॉक्स है भाई, बॉक्स है। अरे 1000 कार्ड छापे थे सर, आप क्यों एक 1000 कार्ड से होता कुछ नहीं है। 1000 कार्ड वाला पैसा कम देता है, तो इसके लिए छापे थे, वो कुछ काम के नहीं है। रिकॉर्ड पे ले, रिकॉर्ड पे ले। अरे क्या रिकॉर्ड पे लो सर? रिकॉर्ड में नहीं, शेड्यूल में ऐड करो इनको, शेड्यूल में ऐड करो। शेड्यूल में कहां पे एप्लीकेबल होगा भाई? हाँ सर कर लिया सर, शेड्यूल 1 के अंदर लाइब्रेरी ऐड कर दिया। बाद में मनीष जी को बोलेंगे निकाल देंगे सब, तो चिंता मत कर। मनीष जी का फीस ही नहीं दिया, कहां निकालेंगे हम लोग इसको? अरे तो मनीष जी नहीं है तो दूसरा मिलेगा यार, क्या टेंशन ले रहे हैं? सर आपका झोलजाल का एक्टिविटी क्या बताइए, क्या झोलजाल करते हैं झोलजाल में? ऑनेस्ट में झोलजाल जो है वो क्या बोल रहे हैं? हाँ वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हैंडलूम। एक मिनट, स्टेटमेंट इनका ले रहे हैं, ये सब बता रहे हैं उसको, इसको दूर बिठाओ। सर मेरे को अरे ये सर दोनों का टैक्स है, इसको मालूम है उधर क्या करते नहीं करते, मेरे को क्या लेना देना है इससे? मेरा कंपनी थोड़ी है,
तो मेरे को बता रहे उसमें क्या नहीं करते नहीं, ये हैं। प्रॉम्प्ट नहीं कर सकता है, जवाब तुमको देना है। नहीं नहीं अरे तो मुझे नहीं मालूम बेटा क्या तू सही करते यहाँ हैं। पर हाँ, बेटा तू नहीं सॉरी 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 बोलना नहीं बीच में कुछ। सर दोनों में काम कर रहे हैं, मतलब एडजस्टमेंट यही करते होंगे। हाँ हाँ सब प्लानिंग वाला अरे यही वी डू बंदा नॉट है। डू एनी एडजस्टमेंट मैडम। सर बिल पे तो दिख रहा है। 2 महीने से आपने एंट्री नहीं मारी बुक्स में। अरे वो अरे 3 महीने से रिटर्न नहीं गया है ना सर, Accountant का परवड़ता साथ है क्या? कितना 3 महीने का खर्चा जीएसटी है? रिटर्न आपका गया नहीं है। तो 3 फरवरी महीने का मार्च allowed है। अप्रैल, तो 3 महीने का तो अलाउड है ना। इसका मतलब क्या है? आप लोग अरे रिटर्न भरोगे 3 नहीं? महीना नहीं भरेंगे तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा, तब तक गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। सर नेक्स्ट काउंसिल मीटिंग में डालते हैं एजेंडा, 1 महीने के बाद रिटर्न रजिस्ट्रेशन बंद सर करो। 20 मई के पहले हम भर देंगे। भर देंगे। फरवरी लास्ट का। दिन पे आप जाओगे बाद में बोलोगे पोर्टल क्रैश होता गवर्नमेंट का। नहीं सर वो नहीं होता है क्या? गवर्नमेंट का गवर्नमेंट पैसा तो पोर्टल दबा के देता आ रहा नहीं है है। सर। अच्छा पोर्टल 37 लाख करोड़ का कम होता है क्या? 2.5 राउंड का देना था ना फिर यार, इतना कलेक्शन थोड़ा रह जाता है हमको सुनना तो मिलता हम ही है फिर। करेंगे मतलब। तो और क्या 20 भरते हो बोलो खत्म कर दो अभी मैं 20 सीआर लास्ट अरे फाइनल। कुछ है ही नहीं लायबिलिटी सर चलो मेरा। ठीक है, अब जोलजाल बताओ क्या करते हैं फिर। अरे जोल जाल जो है बोला ना, हैंडलूम वीविंग मशीनरी अच्छा। मैन्युफैक्चर करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ऐसा। अच्छा मशीनरी पर टैक्स लगता है जीएसटी? ये आपका टैक्स अरे लगता लगता है है ना? क्या? वीविंग मशीनरी तो एग्जाम है ना। एग्जाम है वो, टोटली एग्जाम है भाई। एग्जाम है ना? बराबर है। हाँ ठीक है चलो। सर ये बट ये तो bill में जीरो issue दिख रेट रहा एंड है, सर। सप्लाई है ना, 100% एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट ही है। है तो। आप देखते हैं क्या कंपनी की डिटेल्स? नहीं, आपको कैसे इसने मेरे मालूम? को बताया ना, अरे अभी भाई। कान में बोला ना आपके सामने। इतना सब डिटेल बता दिया। और क्या? इनको सब आंसर मालूम, इनका अलग से स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते मेरे हैं पास सर तो एक कुछ बार। मालूम ही उनका नहीं समझ अलग मेरे ही को। देते सॉरी मेरे को रेडी है? रेडी है बस आप समझ? बोलो नहीं, नहीं, सर, नहीं, प्रिंट नहीं। आउट दे दो सर, sign नहीं कर नहीं देंगे। सॉरी रुक भाई रुक, अपना कुछ लेना देना नहीं है भाई तू। आलोक जी आप शांत लोग- बैठो, वो भड़क जाएगा बाद में, अंदर आपको ही डालेगा, वो शैलेंद्र भी बाजू रहेंगे। सॉरी सॉरी सर एक इनवॉइस में थोड़ा इशू लग रहा है सर को। इनवॉइस क्या हो गया? बताओ ना वहीं से बता दो, उसमें क्या है? सर अरे कोई 1 issue लाख नहीं टन है। का डिस्काउंट दिया है, जोलजाल को बेचा है ना। कितना? बाकी कस्टमर बेसिक रेट क्या को था? बाकी कस्टमर को 6 लाख पर टन बेच रहे हैं सर और इनका जोलजाल को 5 लाख पर टन बेच रहे सर हैं। 1 लाख पर लाख का डिस्काउंट कौन देता है? मतलब घर का कंपनी है तो ऐसे अंडर वैल्यूएशन का थोड़ी ना होगा। अरे तो- नसीब को तो बीवी से 5 ये लाख अंडर पर टन ले तो वैल्यूएशन है, रहे। अंडर वैल्यूएशन। सर आप जीएसटी डिपार्टमेंट से आए ना, तो मैं पूछ रहा हूँ खाली। अरे ये रिलेटेड पार्टीज है, अंडर वैल्यूएशन नहीं चलता है, रिलेटेड पार्टी है ना। ये टैक्स अवॉइडेंस है। अरे सर रिलेटेड पार्टी में रूल 28 है। अरे रूल हमको बताएगा तू? तो रूल तो अरे, मेरा थोड़ी है, गवर्नमेंट का ये बनाया हुआ ले है सर। रिकॉर्ड पे ले ले इसको। सर सेक्शन 15(1) रूल 28 है, हम लोग को ये अलाउड है सर। सर रिलेटेड Only पार्टी when है। full ITC is Tax available avoidance to बिल्कुल the allowed recipient. नहीं फुल है। आईटीसी अवेलेबल है ना ITC सर, available एक्सपोर्ट है। है। आपको कैसे मालूम? आपको तो मालूम नहीं जोलजाल के बारे में क्या करते हैं? अरे ले बोला भाई, ना ऐड कर 100% सब एक्सपोर्ट है मालूम है इसने सर अभी। को, ऐड कर। हमारा- हाँ? 100% एक्सपोर्ट है। आपको जोलजाल के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम होता पहले? अरे पर सर देखो अरे सर मुझे नहीं मालूम, इसको नहीं मालूम मालूम। है ना, इसने इनको बोला। नहीं मालूम सर, अरे अभी तो इन्होंने बता बोला भाई। है। सर देखो हमारा 100% एक्सपोर्ट है, आप देखिए मेरी बात सुनिए, आप परेशान कर रहे अरे हैं। हमारा नहीं, जोल जाल का है। जोल जाल का भाई, जोल जाल का एक्सपोर्ट है 100%। सर उनका ही ये है, सर। इनका ही है बेनामी कंपनी में बता दो अरे सर। मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनकी वाइफ है इसके अंदर। ये अंडर वैल्यूएशन का कंप्यूटर का धीरज कंप्यूटर का लायबिलिटी कितना होता है अंडर वैल्यूएशन का? ये ना, 5.5 avoidance- करोड़ है, 5.5 करोड़। 5.5 करोड़। अरे हाँ, कैसे सर। 5.5 करोड़ आपका हो जाता है? वो 25 अरे, बोलता है तो आप 5.5 बोलता है। ये 5.5 करोड़ वो के अलग बारे है। में कभी जवाब दोगे मुझे बताओ? सर इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन एक हफ्ते में दे दूंगा। ये रूल 28 में रिलेटेड पार्टी को इफ फुल आईटीसी इज अवेलेबल तो ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी नहीं एक्सेप्टेड। नहीं सुमित, अरेस्ट 28 पावर्स बता, अरेस्ट पावर्स बता उसको। सर धीरज हाँ सर, तुम वो नोट करो, एक हफ्ते बाद 5.5 करोड़ का चालान लेके आएंगे। वहाँ चलन भर देंगे ना। 5.5 करोड़ का एक्सप्लेनेशन देंगे। एक्सप्लेनेशन में चालान देंगे, लिखो। एक्सप्रेशन में चालान चलन दे देंगे। देंगे। कहाँ से देंगे भाई? ये हम पहले देखो आपके यहाँ से पहले शोकोस आएगा, हम रिप्लाई करें डायरेक्ट। अरे छोड़ ना, तू मैं अटैचमेंट दिमाग करूँ लगा अभी रहा बैंक है। का? अरे हमने बोला ना रिप्लाई देंगे, खत्म हो ठीक है गया। हम रिप्लाई दे देंगे। हमने वही टाइप किया ना, हम हाँ, रिप्लाई देंगे, रिप्लाई हम ऐसा ही टाइप देंगे। स्टेटमेंट तो अपना है ना। हाँ स्टेटमेंट अपना ही। ये स्टेटमेंट तो आपका, आप जो भी चाहो लिखो उसके अंदर, हाँ बस। हम अपने हिसाब से लिखेंगे वहाँ थैंक पर। यू वेरी तू मच। ऐड कर ये दे। स्टेटमेंट हाईली आपका है। ऑब्लाइज्ड। यस, स्टेटमेंट आपका, आप ही लिखोगे जो भी लिखोगे। सर वाइफ का फोन है। उठाओ, लगाओ स्पीकर लगाओ। स्पीकर पे रखो, स्पीकर पे। अरे वाइफ का फोन है। अच्छा आपकी खुद की वाइफ है अरे, क्या? ये तो आपकी वाइफ मेरे को क्यों मुझे नहीं करेगी? पता, 10 धन था आपके पास, सब किसके वाइफ का होगा? लगाओ। ये क्या है यार, ये लोग भी कितना परेशान करते हैं। सर 11:30-12 हो जाएगा क्या आप भाई? पैसा सो भरने गया है का। वो तो, हेलो? बिजनेस हो गया तुम्हारा। हाँ बोलो। सब निपट गया क्या वहाँ पे? अरे क्या का निपट गया, अभी लगे हुए हैं। रात के 2 बज गए, तुमको निपट गया समझ में आ रहा है? घर पे कब तक आओगे आप? खाने में क्या खाओगे, लौकी या टिंडे? इसको लौकी टिंडे की पड़ी है, इधर डंडे पड़ रहे। रखो फोन।
इसीलिए बोला था सर स्पीकर पे मत रखाने का। ये आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता था, इसके लिए मैंने रखा था। बाकी आप पहले बोलते हैं आपको ऐसा पड़ता तो मैं नहीं बोलता रखने को। तो आपकी बीवी प्यार से बात करती है। हाँ? नहीं, हम फोन उठाते नहीं है फिर। यू आर ब्रेव सर। हाँ, यू आर ब्रेव। वो तो घर पे जाके खाना पड़ता है ना सर, वो तो बात बीवी में का जो भी है। फोन नहीं उठाते तो भी बीवी कुछ नहीं करती सर घर जाते नहीं ना, मतलब ये रेडी पे रहते सुमित हैं तो अब तो। टाइम पास करे तू काम सर कर। हाँ सर 2 बज सर गए। फैक्ट्री शेड का एक इनवॉइस मिला 2 करोड़ का आईटीसी है सर। 2 करोड़ का आईटी फैक्ट्री शेड पे। यस सर। सर पर वो दिखाओ। तो अलाउड नहीं है ना सर। हाँ ऑफिस 75 में वो blocked है ये फैक्ट्री तो। शेड ना। फैक्ट्री से तो अलाउड है ना 2 भाई। करोड़ CGST 2 करोड़ SGST हाँ, 4 ये- करोड़। 4 करोड़ हो गया सर। अरे वो नट बोल्ट पे है ना रे, बता। नट बॉल का है भाई, फैक्ट्री सर कहाँ पे हुआ ये? मूवेबल है नट सर, बोल्ट ये मूवेबल है सर। अरे वो श्रीपुर Movable? क्या था ना, वो श्रीपुर क्या था, श्रीपुर का एक पेपर judgment वाला है। था ना क्या? हाँ, श्रीपुर का एक जजमेंट हमारा आया है, उसमें हमको ये अलाउड है। आपका जजमेंट है? नहीं, गवर्नमेंट का जजमेंट है भाई। गवर्नमेंट का जजमेंट अरे नहीं है। कोर्ट का जजमेंट कोर्ट है का judgment है सर। भाई। जीएसटी का है क्या? आप पेटिशनर हो उसमें, आप रेस्पोंडेंट हो उसमें। अरे पर सर ये आप पार्टी applicable हो होगा ना, उसमें? पर हमको एप्लीकेबल तो होगा ही ना, अपने को जीएसटी का जजमेंट है वो, जीएसटी का भी नहीं है। कैसे? एक्साइज का है ना वो जजमेंट, हमको तो मालूम है। सर अच्छा, एक्साइज का है ना, तो एक्साइज का तो लगेगा ना। हम कायदे में क्या ये लिखा है ना वो जीएसटी लॉ मानते में हैं। है। आपको लगता है मूवेबल प्रॉपर्टी है? धीरज, हाँ सर। इनको एक पाना लाके दो, सारे नट बोल्ट खुलवाओ इनसे। चलो जी आलोक जी उसके बाद बोलना वो शेड मूव करके दिखाए, हिला दिया तो मूवेबल, नहीं हिला पाए तो इमूवेबल। परफेक्ट। नहीं नहीं सर, मेरे को तो नहीं आता है, मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, पर जो मेरे को समझ में आता है वो। फैक्ट्री शेड मूवेबल होता है क्या कुछ? अरे ये सर। देखो, ये मूवेबल होता है, लैपटॉप ऐसा, ये बॉटल होती है, ये फोन होता है, ये मूवेबल एसेट होता है। ठीक सर है कोई बात नहीं, हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे। रिप्लाई करेंगे डिटेल में। 4 करोड़ श्रीपुर ऐड कर। ले ले, ऐड श्रीपुर कर, पेपर ऐड मिल कर। का हाँ, जजमेंट है हाई कोर्ट का, और जीएसटी में वी वर्क का ये, एडवांस रूलिंग है ना। एडवांस रूलिंग भी तो हमारे हाँ। हाथ में है ना, एडवांस रूलिंग भी हमारे आप हाथ में है। एप्लीकेंट हो? नहीं नहीं ना, तो सर applicable हम लोग वी वर्क थोड़ी है सर, वी आर ऑनेस्ट। हाँ, आप कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। वी वर्क का एडवांस रूलिंग आपको एप्लीकेबल नहीं है। सुमित, दैट इज किसको एप्लीकेबल applicable? ओनली ऑन द एप्लीकेंट एंड द जुरिडिक्शन ऑफिसर। और सुमित बता ना, वो अमेंडमेंट भी हो गया है लॉ का, रिट्रोस्पेक्टिव। सर कुछ जरूरत ही नहीं है, बता। अमेंडमेंट जबरदस्ती करना पड़ा सर हमको तो। ये तो amendment वो सुप्रीम होगा। कोर्ट चला गया, सब सफारी लिटरेटी सब इतना करके, जरूरत ही नहीं था, इमूवेबल तू ऐड कर दे। हाँ सर कर दिया। तो दूसरा ये इधर कुछ गोडाउन का एड्रेस है इनका, हाँ, वो इनके रजिस्ट्रेशन पे ऐड नहीं है सर एज एडिशनल प्लेस। नहीं है। सर तो आईटीसी कैसे मिलेगा? और ऑलमोस्ट सब इनवॉइस पर माल उधर जाके डंप कर रहे हैं लोग। अरे भाई सर ऐसा है, रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी बार हमने पोर्टल पे डाला है आपके तो क्या लोग हुआ? तो अरे ये कुछ ना कुछ क्वेरी निकालते हैं, क्या? पूरा एड्रेस डाला हुआ है तो देते ही नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है ऐसा नहीं है। सर देखो हमने 3-4 बार एप्लीकेशन किया है, 3-4 बार 4 बार किया है। 4 बार किया है हमने, वो 4 बार वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होकर आया हुआ है। अलग अलग रीजन अलग अलग क्या रीजन बोलते लेके हैं? आता है क्या तुम्हारे बोलते पास। हैं? लास्ट टाइम बोलता है आधार से फोटो मैच नहीं होता है, किसी का मैच होता है क्या? किसी आधार का से? होता है फिर बोलो, ऐसा ऐसा भी। क्वेरी निकालता है सर ये लोग। आप समझे नहीं, जाके का मिल के लेने का। अरे मिलके क्या करने का सर हमको? अरे मोदी जी क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट से नहीं मिलने का। नहीं मिलने का, face to अरे face, face to face। आधार ऑफिसर से मिलने का, आपको सब नीचे से काम करने का है यार। अरे ऑनेस्टली वो काम करो, सर, इतना- आधार फोटो अपडेट एक करा तो लो। आपका वेबसाइट चलता नहीं है बराबर, उसमें अमेंडमेंट करने को जाएगा तो डॉक्यूमेंटेशन के इतना छोटा साइज दिया हुआ है, कहाँ से डॉक्यूमेंट घुसेगा? और 100 KB में क्या आता है सर? फिर बोलता है हमको दिखता नहीं। सर कैसा चलेगा सर ये? 4 बार एप्लीकेशन किया अभी। आप सोचो उसी के अंदर हमको वेरीफाई करना पड़ता है। अरे उसी के अंदर तो थोड़ा कोई आपका fake- तकलीफ है ना। नहीं हमारा कर तकलीफ ऐड नहीं कर है, दिया सर। तकलीफ अरे आपकी ऐड- सरकार ऐड की है कैसे वो। करेगा भाई तू? ये तो हमारा राजेंद्र, ये देखो, राजेंद्र तुम टैक्स भर रहे हो? सर मैं शैलेंद्र हूँ, राजेंद्र पिताजी ऊपर गए, अरे भाई उनसे मिलना है, ऊपर जाना पड़ेगा। नाम में क्या रखा है? उठाएंगे तो तुमको ही आप धर्मेंद्र मत बनो, आप भरते हो टैक्स बताओ। भरते हो बोलो। अरे सर वी आर ऑनेस्ट, हमने कोई चोरी नहीं किया है। देखो हम प्रेशर नहीं करे, वो भी भर भी नहीं रहा है पैसा। अरे मैंने थोड़ी अनपढ़ बोला तेरे को, मैं तो बोला पढ़ा पढ़ी लिखा बोला है, है। बहरा थोड़ी ना बोल दिया भाई, आपको, तू ऐड बोल कर सकते हो देगा। आप। अरे आप ऐड कैसे समझाओ डालोगे? कुछ तो इनको। तेरे को कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तेरे को सर, बार बार खाने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहे, खाना भी नहीं खिला रहे, मैं क्या करूँ? मेरे को एक तो तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, समझ में नहीं आ रहा। सब अभी ठीक हो जाएगा अभी आपका। सर ये बोनस लिमिटेड कौन है? बोनस? उनको पूछो ना, उसका कुछ 10 करोड़ का एटीसी एक ही बिल का है। अच्छा, कौन सी डेट है इनवॉइस? 26 जनवरी का है सर। 26 जैन। हाँ क्या कौन नाम है भाई? बताया? कौन दिखाओ, सा? दिखाओ। दिखाओ इनवॉइस बोनस। दिखाओ। सर, ये बिल- धीरज, ये वो उधर पहले वाला का इनवॉइस हाँ, किधर हाँ, से? सर, वो- इनवॉइस से दिखाओ सर दिखाओ। 6 महीने पहले हम लोग उसका उधर गए स्टेटमेंट थे लिया सर। था ना? यू रिमेम्बर सर? हाँ 6 महीने पहले हम लोग उधर रेड मारा था सर, और वो GST ओनर check ने करो।
सब अंडरटेकिंग दे दिया कि ही इज इनटू हवाला डील हवाला अरे डीलिंग। धीरज सर इसके साथ देखो ईवे बिल लगा है, लाओ, LR लाओ, लाओ। लगा है, ये अरे हर चीज है, क्या आप क्या बिना आप देखे सब कुछ भी कुछ- बोलते सर ये हैं? पार्टी ये का भी बिल नाम है? कुंडली हमारे पास है सर। तुम्हारे पास ये कुंडली सब है? मिलेगा आप लाओ। देखो देखो आप सर check अभी करो। कुंडली खोलता हूँ मैं। अरे सुमित वो तो अंदर है। अरे सर अभी बताता हूँ धीरज, हाँ, सर। इन्होंने जो ईवी बिल बताया ना उसका व्हीकल नंबर परिवहन पे चेक करके बताओ तो जरा। एक मिनट मैडम जरा नंबर बता दो। परिवहन पे चेक करो व्हीकल नंबर। MH हाँ X0 एक्सक्यूज मी सर, मैं जरा आता हूँ। क्या हुआ? बैठो 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 सर ये एक्टिवा का नंबर है। एक्टिवा का नंबर है। सर टू व्हीलर पे आयन बार कैसे जाएगा? वो दो हाथ से सलिया पकड़ के आए ना आलोक भाई ऐसे। मैं आता हूँ जरा, मेरे को टॉयलेट लगा है। देखो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर अरे है। वो आईटीसी ले रहे हो ना, सर, प्रूफ इसको आपको वॉशरूम करना में पड़ेगा। सर मेरा सर डायबिटीज का सर मरीज है। तुम ऐड करो ऐड करो। बहुत जल्दी निकल गई आपकी। बैठ जाओ बैठ जाओ सर 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 बैठ जाओ। मैं आता हूँ जरा, टॉयलेट जाना, बर्डन ऑफ प्रूफ मेरे को भी पहले आना है। जवाब दो। अरे सर वो डायबिटीज अकाउंट डायबिटीज फाइनेंस कौन का देखता है? सर डायबिटिक अकाउंट फाइनेंस कौन देखता अरे है? पर सर टॉयलेट तो देखना अरे चाहिए ना, जवाब सर। मैं देता हूँ टॉयलेट ना लगी- मैं आता हूँ सर, सर, टॉयलेट मैं जाने जवाब दो। देता हूँ, इसको तो जाने दो, ये टॉयलेट बेचारा लगी है, सर। मर मरा जाएगा। धीरज थोड़ा ध्यान देना। हाँ, ये क्या भागे देगा? नहीं। अरे क्या हो टॉयलेट में जाएगा, क्या क्या शुरू देगा? करोगे? भाग जाएगा तो ये आदमी। अरे अरे टॉयलेट कैसे कहाँ भागेगा? जाएगा? आपने दरवाजा लॉक आजा किया भाई, हुआ आजा है। तू आजा। वो खिड़की से टॉयलेट भागा तो। भाई भागना नहीं तुम वापस आ जाना अरे बस। सुनो धीरज सर, हाँ, आप सर। भी जाके इसको करवा के लाओ। आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ भाई। नहीं, फिर नहीं, आप क्या बोलेंगे यार, कैसा फिर बात आप कर बोलेंगे झोल जल गया, उसमें रात झोल के जल गया 3 टॉयलेट बज में। गए सर। जल्दी जल्दी आना भाई। जल्दी जल्दी आ जाओ। 10 करोड़ अभी ऐड तुमको किया। अरेस्ट बोलो, करेंगे ना बोलो, पता अरे यहाँ चलेगा। पे बैठा हाँ है। 10 करोड़ ऐड अरेस्ट करेंगे अभी तुमको। 10 करोड़ का आईटीसी सर फेक इनवॉइस। हाँ यस। हाँ सर कर अंदर दिया। है। सर वही है टारगेट हो गया अपना। ओनर भी सेम है सर, नाम भी सेम है। 10 करोड़ का टैक्स, 10 करोड़ का पेनल्टी, इंटरेस्ट अलग। वो बोनस लिमिटेड नहीं है, बोगस बोगस लिमिटेड है सर। ये लो भाई, ये ले लो जा। ये क्या बाथरूम से क्या सर लेके मैं आए? मेरे टिश्यू पेपर लेके आए? सुन दूसरे ये सीए क्या को लाया? बुला लूं, हाँ नहीं, दूसरे सीए को बुला लूं। आपको जिसको बुलाना बुलाओ, वो बैठेंगे बाहर ही, हम अंदर नहीं आने सुन देने ना वाले। वो श्वेता मैडम को बुला लेना, अरे वो वो नहीं रोज आया। भेजती रहती है ना कुछ ना कुछ। अरे उसको भी पैसा नहीं दिया है आपने भाई, छोड़ो। ये उसको भी नहीं दिया? ये 6 करोड़ रुपया भर दिया है। ये लो सर, 6 सर करोड़ ये का भर पेमेंट दिया क्या हमने। है सर? ये 6 करोड़ रुपया मैंने भर दिया है, ले लो आप। अरे टैक्स भाई साहब, आप बाथरूम गए थे, ये क्या करके आए आप? वहीं पे बात ऑनलाइन में मैंने 6 करोड़ रुपया भर दिया हम लोगों ने। सर उनका 6 करोड़ भर दिया ना, अभी तो 5 करोड़ के नीचे हो गया। हाँ अभी तो अरे बट ये तो आईटीसी रिवर्सल ITC से बता है, टैक्स क्या- से भरना चाहिए, ये नहीं चलेगा। अरे नहीं, अरे ये कैसे ये नहीं चलेगा। अरे कैसे नहीं चलेगा भाई? धीरज, लॉ में इसीलिए भर सकते इसको हो अंडे ना। वाले सामने एडजस्ट कर दो। ये कुछ चलेगा अरे नहीं। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वाली से भर सकते हैं ना भाई। क्या लॉ है क्या सर? तुम कहाँ गए थे और करके क्या है? टॉयलेट गया था, बोला ना 6 करोड़ साथ भर में के आया, जाने के लिए। फोटो करके आया ना सर। सर वहाँ पे सर्वर रखा है तो इन्होंने। ये पैसा भर मेरा दिया 6 सेंस बराबर तो बोला था साथ में जाना। चेक कर भरा है क्या उसने बराबर? हाँ, 6 करोड़ सर, बराबर तो अंडर वैल्यू हाँ, अरे सर 6 करोड़ भर दिए है ना। अंडे वाले इसमें adjust कर दो सर। उससे क्या है? नहीं, adjust कर उसमें दो। बिल नंबर डाला है ना नहीं, तूने? सब कुछ डाला बोनस है। लिमिटेड बिल नंबर सब सब कुछ डाला डाला है है ना? सर, वो एडजस्ट नहीं कर सकते, नीचे वो पार्टी का नाम, इनवॉइस सब नंबर डाला सब है, डाला सब है डाला है वो। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट भी कर हाँ तो दिया। उसको सर ये अलाउड थोड़ी अलाउड है कैसे मैडम अलाउड? मैडम आपके मामा है ना इनकम टैक्स में, उनको टिप भेजो। 271 आपका कौन सा नया सेक्शन आया ना, अरे उसमें इनकम टैक्स का 200% पेनल्टी लगाएंगे इनको। सर एक डिपार्टमेंट दूसरा डिपार्टमेंट कैसे भेजेगा? अभी कुछ सब है ही नहीं, भेजेंगे। एप्लीकेशन ही नहीं हो रहा है तो। हाँ पाठवले सर हम सब कुछ करेंगे, आपका स्पॉट पे सब रिकवरी, अभी सब बहुत कुछ होगा। अभी आपको रुको, अभी आप देखो आप क्या क्या करते हैं हम। ये भाई स्पॉट पे कैसे रिकवरी करेगा? स्पॉट रिकवरी है अलाउड नहीं है ना। पैसा भरने का नहीं और खा अरे बात कर। रिकवरी अलाउड नहीं है। ये इसको क्यों लेके आया भाई? क्यों? क्या है यार, ये विटनेस है कि क्या है? स्पॉट मजाक है। स्पॉट रिकवरी अलाउड नहीं है भाई। सब अलाउड है। क्या कुछ भी अलाउड नहीं है सर? एक काम करो, इनको हमने लैपटॉप किया है दो, ये क्या? भरेंगे। हमने रिकवर नहीं किया, आपने वॉलंटरी भरा है। हाँ। एक तो मैं पहले बोला कि मैं डायबिटिक पेशेंट है, मेरे को खाना चाहिए। रात का कितना बजा है? देखो आप कितना बजा है? हाँ 4 बजे है सर। वो मॉर्निंग का 4 बजा है। हाँ एक तो आप ये जीएसटी में रोज नया नया लेके आते हो नोटिफिकेशन, हाँ उसको बाद में चेंज करते हो। उसमें 2 महीने के बाद एक दिन के बाद वापस नया एक्सपेंशन लेके आते हो। कुछ भी हमारा अमेंडमेंट आएगा बराबर है, हमारे फेवर कुछ भी आता है यार तो गलत है। तुम्हारे फेवर में आता है गवर्नमेंट को, तो सही है। कैसे चलता है तुम्हारा काम? अरे अब हमारा काम क्या है? तुम बैठो आधार कार्ड चाहिए, ये ले पूरा पर्स ले, ये लेके जा। क्या करने का? हाँ इट इज नॉट गुड। नहीं आप बैठो यहाँ पे, बैठो यहाँ पे। बैठो। हम क्या चोरी कर जाएगा यहाँ पे? उसको पानी। हाँ? पानी दो हाँ, पानी क्या? एक गोली अरे दे। कंटेन नहीं चाहिए, कुछ
भी नहीं चाहिए। सर में पानी मारो उसको। ये नहीं है। अरे हर टीम तुम क्या करते अरे, हो? अरे वो सॉफ्ट मिल गया इसको, मिल गया है। अरे मिल तुम समझो, हर दिन वो पोर्टल पे तुम नोटिस डालता है, हमारा काम है क्या नोटिस चेक करने का? नहीं, वो आपका ही काम है, चेक क्या यही करने धंधा करे? बैठो कब से तुम लोग ये मगजमारी करते हैं? अरे बैठ जाओ। अरे भाई ये तो भड़क गए तो। अरे इसको कुछ हो नहीं मर भी जाएगा यार तो। नहीं, ये गलत चीज है, ये गलत चीज है। अरे बैठो तुम बैठो। ये आप बोलते हैं 25 करोड़ 30 करोड़। पानी पी लो बैठो। आप धंधा करेंगे ये सब करे? अरे आलोक जी बंद कर रहे हैं हम लोग। सैलरी मिलता नहीं मेरे को, ऊपर से ये सब करने का। हो गया लो पानी पी लो। स्टेटमेंट प्रिंट ले लो फटाफट। मैं इसके लिए कब से बोल रहा था, बेचारा डायबिटिक है, बीमार है, मरा जाएगा, इसको खाने को दो। आपने ब्लड प्रेशर के बारे में मुझे नहीं बताया, आपने कहा डायबिटीज बोला। डायबिटीज और बीपी दोनों बोला। अरे बीपी का मालूम नहीं था मेरे को। सब कुछ नहीं हुआ, टेंशन मतलब प्रोफेशनल आदमी है, आदत रहता है इन लोग को रात में बैठने का ऐसा। क्या हुआ, स्टेटमेंट कहाँ तक आया? हाँ सर मेरा ये हो गया, प्रिंट आउट दो। और कुछ नहीं ना? एक बार ऐड कर दिया सर। एक बार डेटा लिस्ट भी चेक कर लो, किसी का जीएसटी कैंसिल है क्या पोर्टल पे, वो भी चेक कर लो रेट्रोस्पेक्टिव। अरे डेटास का कैंसिल है तो क्या फर्क पड़ेगा सर? अभी फर्क मालूम पड़ेगा आपका क्या है, चेक करो किसी का एब इनिशियल कैंसिल है क्या। सर्वर चल रहा है मैडम? हाँ सर स्लो चल रहा है, ये जीएसटी का साइट ओपन सर ये आज तुरंत तो नहीं मिलेगा। हाँ? अपनो सर, पॉइंट बाद में वेरिफिकेशन करवा लेना। हाँ सर ये अपना पोर्टल पूरा वेंडर लिस्ट, पूरा डेटा लिस्ट, दोनों में से कोई भी एब इनिशियल कैंसिल्ड है, रिकवरी 74। बैकअप लिया है तो ऑफिस जाके चेक कर। हाँ पूरा चेक करवा लेना ये पूरा। सर वो लुकअप से दोनों अच्छा वो स्टेटमेंट दे दो तब तक फिर। सर चेक किया ना आपने एक बार? अभी रात को 4 बजे और क्या क्या होगा मैडम, जैसे ही बनाए बराबर निकाला ना धीरज? हाँ एकदम सर परफेक्ट, नो सिंगल एरर सर। ये लो आराम से इत्मीनान 8 पेज का स्टेटमेंट है, 2 मिनट पढ़ लो। मजाक है क्या? 8 पेज का 2 मिनट में कैसा भरेंगे? तुम देख बराबर है क्या सब? अरे प्रोफेशनल तो 1 मिनट में करके जाएगा। कितना लाइबिलिटी है भाई है? देखो हाँ लायबिलिटी कितना है? निकाला तुमने? 71 करोड़। अरे यहाँ 710 करोड़ लिखा हुआ है, क्या 71 करोड़? अरे टर्नओवर नहीं पूछा, लायबिलिटी पूछा भाई। देखो तुम क्या दिखता है? लाओ दिखाओ क्या हो गया, दिखाओ उसको। 55 नहीं है सर, 5. वो भी रात में प्रेशर में आ जाता है बेचारा आदमी, इतना रिकवरी नहीं है धीरज। वो बेचारा वो सुबह सर से कुछ खाया नहीं, उसको रात बाहर में भी ना लेके सर नहीं गया, कैसे करेगा वो काम? उसको बिंदी रह गया एक बीच का। सर डेसिमल डालो, 5.5 है, 55 लिखा आपने। हाँ वो बिंदी रह गया। एक मिनट कर दो सर। इधर पेन से कर दो सर। कर दे हाथ से मार अरे दो। नया निकाल देते सर, पेपर वेस्ट होता है ऐसे। नहीं वो चलेगा सर। नहीं चलेगा नहीं ऐसा। लिया सर, नया नहीं। समझो मेरी बात ये क्या 55 का 550 कर देता है लोग? क्या तुम लोग क्या करते हो तुम लोग भाई? आदमी को मार जाने का क्या भाई? कर रहे हैं ना, करेक्ट कर रहे हैं। करे कभी करेगा। हाँ सर अभी आप क्या करने का बोलो? 4 करोड़ बचा हुआ है अभी भी आपका। देख लो अभी साइन करो इसको। 4 करोड़ बचा भी आपका, अरेस्ट करके लेके जाऊं? 4 करोड़ अभी भी अरेस्ट कर सकता हूं मैं, पेंडिंग आपका 4 करोड़ अभी लायबिलिटी। कभी भरोगे? 5 करोड़ तक तो आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। कर सकता हूं मैं अरेस्ट आपको 2 करोड़ के ऊपर मैं कर सकता हूं, ये आप अच्छे से जानते हो। बेल बॉन्ड लेना पड़ेगा, 2 दिन तो अंदर हो गया, आज वीकेंड हो गया है। देखो ये वापस मुझे प्रेशराइज कर रहा है, मैं वापस बोल नहीं ठीक है तुम साइन करो, चलो साइन करो। पढ़ दिया बराबर? साइन करो, तुम आपको रिप्लाई देंगे इसके ऊपर। अरे 10 मिनट में पढ़ लो। ये उनका रबर से लेके जरा मरवा दो। और अच्छा पंचनामा भी ले लेता साइन, उसका विटनेस का साइन ले लो। हाँ सर सर ये लो उठा उसको, उठ गया, हो गया बस। मैं बोला था सुबह 10 बजे कि 1 घंटे में छोड़ूंगा, देखो सुबह का 11 बजे आ जाओ। साइन करो अच्छे से नींद है। आप इधर साइन करो फटाफट, इसमें करो। सब आप बाद में देखेंगे क्या करने का। इसका एक कॉपी ले ले। हाँ एक कॉपी दे दो। दे दो बैठो, कभी हो गया रबर से मारो। अरे भाई ये जस्ट कॉपी ले क्या? ये कुछ काम भी ये लो सर सिग्नेचर करो। ये क्या है भाई? पंचनामा है। पंचनामा इसका कॉपी इसका मिलेगा, सब देते हैं, सब दे साइन। इसका मिलेगा कॉपी लाओ। साइन करोगे तो मिलेगा कॉपी, नहीं तो नहीं मिलेगा। बोलो लेके जाऊं? लास्ट टाइम स्टेट वाले आए थे, ऐसे ही लेके गए, हमको कुछ कॉपी दिया नहीं। आप लोग कॉपी भी देते नहीं। हम सब कंप्लाई करते हैं। कॉपी का पैसा मैं देता हूँ। पंचनामा बराबर है। पहले आप साइन करो। ये ले लिया ना? हाँ परफेक्ट। स्टैम्प नहीं है ना? स्टैम्प ये है ना? रात को 4 बजे क्या छूटा क्या मालूम चलेगा। बस ठीक है आप साइन करो, फिर हम देखते हैं। चलो पंचनामा हो गया, फटाफट साइन करो। ये तू देख, आराम से देख। सर अभी जाए ना घर पे सर, कि ऑफिस जाना अरे ज्यादा पड़ेगा, हाइपर हो जाएगा आदमी यार फिर। अभी ये ऑफिसर का ठिकाना नहीं अरे है। आपने साला 55 करोड़ का 5.5 का 55 करोड़ क्या देखना चलो हो गया, चलो करो साइन करो। ठीक है सर साइन जैसा कर एक दो। ऑफिसर ऐसा सब ऐसे लोग आए पता नहीं। क्या बोल रहे? साइन करो। साइन करो अभी 4 बजे। क्या मैं बोलूँ? नहीं करो लाओ चलो साइन तो करने दो, फिर आप बोलोगे वापस कर दिया। इसका कॉपी तो हमको मिलना चाहिए।
पंचनामा कॉपी मिलेगा आपको। चलो ऑफिस चलो, वहाँ पर जेरोक्स चालू है, मशीन देता हूँ आपको मैं। सुबह आ जाओगे लेने के लिए पंचनामा कॉपी? वो भी तू ले ले रे, जाके ले ले। दे लेता हूँ आगे। हाँ, साथ चलो। में चले जा। अभी क्या चले जाओ सर, इधर तो इले। खाना मिला सर, कुछ फिर मिला। 2 दिन बाद आएगा दूसरा कुछ। बराबर 10 बजे आ जाना, 11 बजे मिल जाएंगे आपको। 10 बजे आ जाना एकदम पता बराबर। और वो कैश जो है ना ले लो, गिन लो, कल बैंक में भर देना। लायबिलिटी बाकी और 4 बाकी मिनट का बचा जो अभी। भी टैक्स भरे ना वो तुरंत भरना शुरू वो करो। चलान जो हमने भेजा है वो, हाँ वो देखते हैं हम लोग। देखो वो देखते चलान हैं। 6 करोड़ का तो भरा बाकी हुआ का है। कब भरोगे? वो कैश दे दे उनको। वो भर उनका। देंगे सर। बाकी का हम भरेंगे ना, फटाफट एकदम। हाँ हाँ हम भरेंगे ना, तो हम चलो clear ठीक करेंगे। है। चलो धीरज फटाफट वाइंड अप करो सब पूरा। Yes, sir. सर, थैंक यू वेरी मच। सर कंप्लीटेड। हाईली ऑब्लाइज थैंक यू। देखो हमके कोई प्रेशर नहीं किया है फॉर हमने। योर कॉपरेशन। यस यस यस, थैंक यू। थैंक यू। चलो। भाई, आप कोई जबरदस्ती नहीं इधर आपके मिलो। साथ, नहीं नहीं सब कुछ एकदम। आप ज्यादा पर टेंशन अगली नहीं बार से लेने का। विटनेस तो अच्छा क्या लगा। इतना खाना अरे अच्छा पानी तो को एकदम दिया, शांति से हम- बैठा था चलो, ठीक देखो। है। मैडम खाने को देती नहीं, एक आपको बोलती है खाना देना चाहिए ना, खाना आप देना चाहिए हमको। अरे छोड़ ना यार, चल हो गया ना अभी। चलो जल्दी टैक्स भर देना। चलो थैंक यू सर। जल्दी thank you. कभी बाय बाय। बाय बाय। चल हाँ, कल अभी मत आना सर। है? हाँ 10 साल के आप बाद आओगे ही। ना? हाँ मैं आऊँगा। हाँ तू आ जा जाओ भाई, ना तेरा अभी भी क्या? काम हो गया, तू यहाँ पे बैठ जॉब जा। अप्लाई करना है क्या? क्या? नहीं जाओ जाओ, हो गया। अभी कोर्ट में बुलाएंगे बाद में, कोर्ट में बुलाना आना पड़ेगा थोड़ा एक बार। So friends, thank you. This is our. Thank you. This is the presentation of actually what's happening, and in each and every line there is some message. There is some hint about the law, facts, and consequences. So the concept of this particular type of session is of Manish bhai. Thank you. Then the script dialogues what you have heard is of Sumit. Also that we have taken care of the law as well properly. Not even disrespected much to the businessman. Not also pressurized also to the businessman. But this is the way how the things go on, or maybe much more. We have tried to depict before you. Now we will take up your questions also, and we will give our some observations also. Right? So before we take up the questions, meanwhile you prepare the questions, what you observed, what you want to know, what are the mistakes we have done. So we have with us Saurabh Ajmera and Shweta madam here. So if you want to address to the participants about the activities of WIRC. Yeah. Thank you, Manish Bhaiya, the past chairman of WIRC. And this is the particular concept which we came to know from Manish Bhaiya only. So let's have a big round of applause for Manish Bhai bringing such a practical concept where we can learn so many things. And the way you all have presented, my compliment to each one of you. Let's have a big round of applause for all the participants over here. And friends at WIRC, we are doing a lot of things in terms of practical aspect in this year also under the leadership of Ketan Sayyaji, the chairman of WIRC. And today also we had committee meeting, lots of committee meeting we had today, and in which we have discussed that how practical aspect, more and more learning with the respect of practical note can we bring to our members. So lots of videos we are preparing, lots of you can say publication, case studies, we are trying to come with that for the betterment of our profession and to serve public at large in terms of members. And this is one of the example where we got maximum tractions, because this I believe first we had in the chairmanship of Manish Bhai, and then we had in our regional conference at NESCO. Am I right, Manish Bhai? Yeah. In NESCO also we had, and it was fantastic event, and the feedback we received from membership is, I can say, excellent in terms of knowledge sharing, because whenever we see the practical aspect, we can correlate in an effective way and we can learn law in a different way. So this is the thing, my compliment to each one of you. And friends, at WIRC also, we are taking so many initiatives to serve our members, be it a Prerna, be it a industry programs on a regular basis, and today also we have discussed so many concepts. Please follow WIRC on a regular basis. You will have a great interaction for the knowledge sharing, and we can say we are doing best handholding to our profession. Thank you so much.
I request now Sweta madam to share some view. Thank you, Saurabh. I think no doubt about it, a fantastic act we just saw, and no doubt about it कि ये GST का जो whole search का process होता है, probably अगर ये ही उन्होंने technical terms में presentation दिया होता, तो शायद कुछ लोग थोड़ा सा drowsy feel कर लेते हैं after half an hour or 1 hour. But by doing this with the drama, I'm very sure that nobody could have just एक झपकी भी किसी को लगी होगी. I'm very sure about it. First time, I am not practicing in GST, but when I saw first time here in WIRC and then NESCO, I can say that I enjoyed a lot and learned a lot from this act. So many things जो हम समझते नहीं हैं कि क्या है. By doing this act, फिर आप लोगों ने present किया, बताया कि ये कहाँ mistakes है और क्या right law hai. This is, I think, audio-visual way is a fantastic way of learning. So thank you so much on behalf of WIRC to all of you. The whole team is working very hard since 2-3 years. I witnessed that. At WIRC, as Saurabh has just said that we are having our committee meetings since yesterday, and tomorrow also we have. Activities, no doubt, under the able leadership of Ketan Sayya sir. Lot of activities, lot of new initiative we have started this year. My earnest request to all of you, keep track on WIRC website. So many new things which we have started this year for practicing chartered accountant, the Bhagyodaya series and what not. So please keep a track, update raho aur aapko informations to milti hai. And if any one of you would like to participate maybe as a coordinator, speaker in any of our activities, please submit your details on my role at WIRC. So of course, we 21 regional council members are doing at our level best, but support from all of you is definitely required. So whenever you required our support, we are always there, but of course, your participation is utmost required. So with this, thank you so much, and we'll hand it over to you. Thank you. Thank you. So now one by one, you can raise an hand, and if you can give the mic to audience. So whatever your queries, whatever you observed, Observation also you can mention, and your questions. Your questions, and where you find there are lapses. We will note down the questions and answer all one together. Yeah. Feel free. Good evening, all of you, sir. Yeah, good evening. From my practical experience में एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे. When one of my client had such survey at their place from SGST department, and उस टाइम जैसे आपने authorization दिखाया था, तो मैंने ऐसे observe किया था कि CGST का जो department है, they have a proper authorization with them while conducting the search. But SGST के मामले में थोड़ा सा situation dicey है. तो उन्होंने क्या किया था, सिर्फ उनके स्टाफ को, प्यून को उन्होंने कुछ दिखाया था when the office has not started. तो ऑफिस शुरू होने के पहले ही वो लोग आके बैठे थे और उन्होंने वो एक पेपर उनको दिखा दिया और उनका साइन ले लिया. और बाद में जब हमको बुलाया था एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो हमको बोला था कि हमने ऑलरेडी वो सब इशू कर दिया है, तो नाउ वी कैन नॉट गिव यू द कॉपी ऑफ डैट. तो हमने पूछा था कि भाई हमारे पास तो उसकी कॉपी होनी ज़रूरी है ना, लाइक कौन से जगह से आए हो, क्या है वगैरह. तो उन्होंने बोला नहीं, वो सब हम आपको दिखाने के लिए वो नहीं है. तो क्या ये ऐसा ही है, या फिर क्या हम वहाँ पर आर्ग्यू कर सकते हैं और वहाँ पर वहीं पर उनको स्टॉप कर सकते हैं, या फिर एंट्री देने से मना कर सकते हैं? Yeah, right. Search warrant, copy, and to whom to show. So we will. Yeah, next. Yeah, we'll answer this. Yeah, we'll answer all the questions together. So we'll note down the question. पीछे. गुड इवनिंग सर. वन ऑफ द इन प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा हुआ कि SGST डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी सर्च किया था. 3 साल बाद सेम ईयर्स के लिए CGST वाले भी आए फॉर द सेम ग्राउंड ऑफ रीजंस. तो हमने उनको एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट पूछा, डोंट यू हैव एनी फैसिलिटी दैट ऑलरेडी सर्च हैज़ ऑलरेडी बीन कंडक्टेड. सो बोले ऐसा हमारे पास कुछ नहीं रहता. बोले सेकेंड, वही केस में ऐसा ऑब्जर्व हुआ
जब मैंने उनसे पूछा आप बताओ मेरे को डॉक्यूमेंट, तो इवन दे हैव डिडंट अलाउड मी टू टेक द फोटोज ऑफ देयर नोटिसेस और सामान और कुछ भी. तो मैंने ऐसा तो नहीं होता है सर, एक तो मेरे को डीन नंबर भी नहीं दिख रहा है, डीन भी नहीं दिख रहा है और कुछ दिख भी नहीं रहा है. नहीं बोले सर दिस इज अन अलाउड, हम फैक्चुअल ग्राउंड्स पे हैं. तो मैंने उनको क्रॉस काउंट किया, आपको क्या मिला, मतलब ऐसे ऑन व्हाट ग्राउंड यू हैव डायरेक्टली कंडक्टेड द सर्च बिफोर. अगर आपको दिक्कत थी तो आप हमको नोटिस भेजते थे, क्या हमारा आईटीसी मैच नहीं है, जीएसटी मैच हमने भरा नहीं है, 3B और 1 मिसमैच है. तो उन्होंने बस एक ही रीज़न लगाया आपका 3B और 1 मिसमैच है, पर हमने ऑलरेडी वो डीआरसी के थ्रू भर दिया था. Okay. Yeah. So noted. Dhiraj. Visit. Yeah. Same issue. Good evening, everyone. First of all, the act was wonderful. We enjoyed every bit of it. Now, my question here is, even in one of my client cases, the audit was done, and in that audit, they saw the company has done so well. GST audit was there. There was no default, nothing. Now, they said, abhi randomly audit nikala hai, so we have to come up with some point. So, jo point mein कोई fault नहीं है, the law has also been like उसको evade कर चुके हैं, void declare कर चुके हैं. वो point पे they have raised queries and they have penalized the company, stating because you don't have other points, so you have to be penalized for this point. Okay. So is this allowed? Even if the law says it's void and it's not, the law double taxation का वो था 5% freight वाला case. Still they have put in penalty because your case is very clean and we've conducted an audit, so we have to show कि revenue कुछ तो generate करना है, and crores of उसमें they've put the order. Thank you. Noted. Audit versus investigation and demand in audit. Good evening, sir. Sir, superb act. Enjoyed thoroughly. Thanks a lot and keep doing it again and again. My 3 queries are there related to real estate construction. Sir, TDR or PTC purchase किया तो GST. Sir, I request restrict your queries only and only related to search of GST. And for that, WIRC has started Samvad Vishwas ka, and every 14th and 28th they are having all general queries of the parties or of the members have been solved between 4 to 6. You can find out the details from WIRC website. So restrict only So to today the focus is on the search. हाँ, okay. Issues in search. तो सर अगर ऑफिस क्लोज हुआ और वो लोग आए तो क्या होगा, बस वो जानना yeah, था. noted. Start and end of. Hi sir, मेरे कुछ मल्टीपल क्वेश्चंस थे. लाइक वन प्रीमाइसेस में अगर मल्टीपल कंपनीज है, सो दे कैन कंडक्ट इट फॉर ऑल कंपनीज. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड इज लाइक they find some like records, as you said, like diary or like loose papers, but they have not recorded in Panchnama. Then can they take afterwards? Then one thing is like they verify mobiles. Can I continue, no? They verify the mobiles like WhatsApp chat and all, so they can verify only for like they can verify for all employees, or can they verify for consultant also? And there is one more question, is in relation to delegation of authority. Like I have seen in so much of the cases, DC is not present, only AC is come. So is that allowed? And This is visit. I've also seen like some search cases when search is conducted only like because they are like they want to find if we are dealing in some like banned things or not. Like one client is doing business related to medicine, so they want to find like you are dealing in some like medicines which are not allowed. So is that work of GST? That was in my mind, one question. Okay. And during search, they have issued so many notices to like my creditors and debtors. They don't have any DIN number.
But how is it like if five people are replied, then they generated DIN backdated, as they allowed for 15 days DIN generation. So what to do in that cases? Like they have issued 10 notices, they have no DIN number, 5 replies are come, then they generated DIN number for those 5 only. And in some cases, summons are sent and they called on the same date. Okay. Is that allowed? And like in this act, I was not aware, like this third party witness are also allowed, or like I have not seen in like some cases, like there was no witness as such. So you covered all the points? One last, like one I have seen in your act, payment is done during raid. So is that allowed? Like I might have read one case law in which they have not allowed. There was once High Court judgment, I believe. And there was in your act the address is not registered. I have applied, but it is not registered. Then what happened in that cases? I mean, unregistered place, ITC issue. What to be done? Yeah, fine. वो एक्ट के अंदर 10 करोड़ के सामने वो बोगस परचेज वाला था ना, बोनस परचेज, बोनस लिमिटेड वाला करेंगे कहाँ? वो बोनस लिमिटेड का परचेज था ना, 10 करोड़ का आईटी से था, उसमें से वो उसने 6 करोड़ ही भरा, ठीक है, पॉसिबली कुछ 5 करोड़ का वो जो लिमिट है, तो अरेस्ट 1 CR के बाद कर सकता है या 5 करोड़ के बाद, उसके ऊपर थोड़ा क्लैरिटी चाहिए, एक वो, और दूसरा वो गोल्ड मिला वो लोग को, ठीक है, उसका क्या इम्प्लीकेशन, क्योंकि वो तो इनकम टैक्स का है, आई कैन अंडरस्टैंड, GST में क्या लेना देना उसका, दो क्वेरी है। नोटेड। Yes, one by one. We have enough time. Hello, good evening, sir. Yeah, good evening. I have a case, case that the sister concerns are there, but they are in separate registered companies located in separate premises. They don't have a common directors. They're totally distinct entities. But because the accounting team is same, so the files of both the companies are in the same location. So if the GST officer, suppose, is reading of one particular entity, they normally ask why the files of other entities are there in that premises. So what possible explanation can be given? Okay. POB many accounts and so. I'll answer that. हेलो सर, वो स्पॉट रिकवरी हो सकती है या नहीं हो सकती है वो? उसने ऑलरेडी पूछा था. Yeah, we'll answer that. Good evening, sir. Can you just enlighten on the Panchanama process? What is the Panchanama process? Under what circumstances it can be? What are the points that assessee as well as the tax officer needs to take care? Will do, sure. Yeah, यहाँ भी दीजिए और फिर पीछे ले जाइए. Sir, I have seen that the letter which is received from them at the time, at the start of the inquiry, so it has intimation, inquiry, search or survey, and certain sections are given. I think 67, 1, 2, and all those things. But they don't cut which is applicable. So can we object on that, number one? Number two, what is the difference between the first one and the second one? If it is an inquiry, what is their scope? If it is a search, what is their scope? I don't think so. Anywhere raid word is used in the act. If I am wrong, you please correct me. Yes. Second, state versus center, that has been already asked, double inquiry. Third is locations where all they can go. Place of business, place of directors, other vendors. Fourth one is in the notice which they give. What I saw was in the state GST, there was name of the party
and then all group companies. And there were only 3 GST numbers which were mentioned. Now, party had 4, 5, more than the list which is given. Whether they can extend the inquiry on the spot to all other GST numbers, and not necessary that the group companies' locations are the place where they have come. So suppose the party has more than with different GST numbers and PAN numbers, but they may have some documents related to that. And in the books of accounts, some of the entries, particularly sales and other things, we make on the provisional basis for the easy, because accountants, they are not so good in the making invoices and all. So we know that over a period of time, if invoices is done, so we can change the voucher type and just make a print. On that basis, on some provisional entry basis, whether they can demand for on the spot, they can ask for the recovery proceedings or confirm the book. So the question is, there is no actual sales, but provisional you have made. Provisional entry. Suppose there is a contract which will be a RA bill. So RA bill 1, 2, 3, 4. So we just on the basis of certain timelines, so the accountant is just asked to change the date, change the voucher type and take the print. So on that basis. So whether they can do it on that. Then most of the times it happens that the tally backup which the client has in their records, that is not updated. It goes to the CA. CA has the final tally backup. And old tally backups are also available along with the final tally backup. So whether they can question the old tally backups and old books of accounts, who all can be asked to stay? Suppose they can come at 9, 9:30, 10 o'clock, and it goes long enough. So what can be the timings of the general staff? There are some salesperson, some non-accounts related person in the office, whether they can insist on them to be there. And later on, who can add on to the process, a CA, external consultant accountant. Then they insist more on DRC3 zero payment instead of payment through the normal process of 3B. And certain transactions which are for the current financial year, say 2024-25, can also be declared through process of GSTR 1 and 3B. But still they insist that you pay it. And can they ask you to, because in one of our case, when we said, okay, we'll declare in this month, they said, no, we want 2-3 months back this thing. So how much to budge upon it? And certain cases, like particularly in construction and infra industry, the invoice date, they insist to put it on the backdated, but all these bills are subject to approval of the customer. So they push us to go for a backdated invoice entry. So on that, I need your clarification. Are you asking for the recovery from the customer or? Yeah, so they ask for the bill to be punched on a back date, but certain infrastructure and real estate contract basis, a contractor, he needs to first get the bill approved from the customer. Okay. Yeah. Yeah. Good evening, everyone. My question is related to loose papers which are found during search. Like if they contain some amounts, so I mean how that needs to be dealt with. Is it the onus on the company to prove that it is unaccounted income, or how means? Okay. So I just want to know what is the emphasis of statement recorded by the GST officers during post-search proceedings?
Hello. Sir, I wanted to know regarding the witness. So as we saw, the witness was some guy picked up from street side. So if we feel that he's a person who is not understanding the scope of the search well, then can we insist the tax authorities to get some better and person who knows the purpose of the search and that can be a witness? Second question was, suppose there's a client who's broadly operating from on a work from home based model, and the MDs and all are usually not present in office, and the search takes place. Then do they call upon on the spot to be present, or they do give some time, or they come on some other day? And the third thing was, suppose in some large companies this search is happening, then whether other employees are allowed to carry out the routine work, attend meetings and everything, or everything is strictly blocked? Okay. Business disruptions during search. Disruptions. सर एक क्वेश्चन पूछना था ऐसे कि जैसे आपके जो मॉक में दिखाया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट वाज नॉट अलाउड, और एक सर बोल रहे थे कि मैं आपको बाहर ही बिठाऊंगा, अंदर नहीं आने दूंगा। तो ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया था मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कि जब सब कुछ ठीक चलता रहता है पहले 2-3 घंटे में, तब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मगर ऑल ऑफ अ सडन जब वो क्लाइंट एग्रेसिव हो गया था, तो ऑल ऑफ अ सडन फिर जीएसटी ऑफिसर्स सीए को फ़ोन करते हैं और बुला लेते हैं। तो उस टाइम पे ये सब इन्वॉल्वमेंट सीए का हो जाता है उस इमोशनल एग्रेशन में। तो क्या प्रिकॉशन एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमको लेनी चाहिए, सो डैट वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड इनटू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? क्योंकि क्लाइंट तो ऐसे हाथ ऊपर कर लेता है कि मुझे तो उससे कुछ पता ही नहीं है, ये सारा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट कर लेता है और मैं तो सिर्फ बस बिजनेस में ध्यान देता हूँ वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है और फिर सीए को बाद में फिर बाजू में बिठा के फिर अल्टीमेटली जो आपने स्टेटमेंट लिया था वहाँ तक उनको लेके जाते हैं। दूसरा एक चीज़ था कि ये जो रेट या सर्च चलता है तो वो कितने दिन चलते हैं? मेरा एक्सपीरियंस ऐसे था कि वो 5-6 दिन चलता रहा और जब तक उनको सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ अल्टीमेटली, तब तक उन्होंने वो चालू रखा। तो जैसे तो मेरे हिसाब से सर्च जो भी किया था वो क्लाइंट का वॉल्यूम ऑफ ऑपरेशंस देख के मैक्सिमम 24 आवर्स इन वर्किंग टाइम उतना सफिशिएंट था। फिर भी क्या ऐसे खींचा जा सकता है क्या हैरेस करने के लिए, या अल्टीमेटली उनका जो इंटेंशन है वो जब तक अचीव नहीं होता है तब तक? और तीसरा क्वेश्चन ऐसा था कि उन्होंने उनका जो कुछ जैसा आपने बोला था 30 करोड़ का टारगेट करके आए थे, तो उन्होंने भी ऐसी 30 करोड़ में एक अमाउंट का टारगेट रख के आए, वो हुआ नहीं, मगर बाकी सारे टारगेट उनके कंप्लीट हो गए। और फिर ये वाला टारगेट कंप्लीट करने के लिए उन्होंने वो 6 मंथ्स का पेमेंट हुआ नहीं और वो सब इशू निकाल के उसके अंदर से काफ़ी सारा रिकवरी कर लिया और उनका टारगेट कंप्लीट कर लिया। ओके। तो ये सिचुएशन में भी हमको वो रिवर्सल अल्टीमेटली आगे जाना है, तो कैसे उसको झेलेंगे? और इसकी ऑर्डर वगैरह तो आती नहीं है कुछ, तो इसके लिए कोई उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या, या हमारे पास कुछ प्रूफ होगा जिसके टाइम हम लोग असेसमेंट के टाइम पे एक्चुअली जब भी फेस करेंगे तो हमारे हाथ में क्या होगा? एक्सेप्ट वो स्टेटमेंट छोड़ के बाकी हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं होती है जिसमें हमारा ग्राउंड प्रूव होगा। और कोई प्रिकॉशन ऐसे लेनी चाहिए कि जिससे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा बचाव हो सकता है। ठीक, थैंक यू सर। लास्ट नहीं है, फर्स्ट। सर गुड इवनिंग। सर अगर स्टेट या सेंट्रल कोई भी सर्च के लिए आता है, सो लेटर देता है लेकिन दे डोंट गिव द रीज़न कि क्यों आया है, और फिर रीज़न देने के बाद फॉर एग्जांपल स्टेट वाला आया, वो बोलता है ई-वे बिल है, अभी एंड तक उसने ई-वे बिल तो चेक ही नहीं करता है, बाकी सबका रिवर्सल सब कुछ लेके चला जाता है। वी इवन से कि भाई ऑडिट हो चुका है, तो विदेश से कि भाई ऑडिट रिपोर्ट दिखा, ऑडिट रिपोर्ट में ये क्वेरी नहीं है, सो यू हैव टू रिवर्स इट। देन ऑल्सो देयर इज अ केस वेर इन वी से कि भाई सर सेंट्रल वाला आया है, अभी हमने रिवर्स किया है, तो देश से कि ऑडिट का हम लोग नहीं चेक करेंगे, अगर आपका सेंट्रल वाले ने रिवर्स किया है तो आप प्रूव करो। सो हाउ शुड वी actually tell them, or how should we present our case, because this center versus state, and the exact problem is even search in case of investigation or anti-evasion or whatever, everywhere anti-evasion if come there is a cash transaction and then no one shows the exact proof कि भाई ये है, this is evidence they never show, और दूसरा कुछ करके चले जाते हैं, and the problem that happens is कि सर वो 2 साल 3 साल चलता है, so what is the time period in which it can be closed or it should be closed? थैंक यू सर। ओके, फ्रंट रो में देना, एक लास्ट उधर दे दो, लास्ट
फिर यहाँ दे दीजिए. I think last 2-3 questions, principle based will be better. Yeah. Request not to repeat the questions which has been already asked, because I am seeing now the questions which are already asked are repetitively you are asking. Yeah. Good evening, everyone. Sir, first of all, it was an excellent way to elaborate the topic. It was very interesting for all of us. Thank you so much for such sessions. My question is, if you can elaborate about retraction of statements. Malab, the act which was here, that there was no coercion from the department side, but somewhere I've seen that there exists some kind of coercion wherein you have been forced to state that this is the fact, this is you tell this, you get it signed. So what is the way and what is the procedure to retract those statements? Okay. Yeah, thank you. Yeah. सर ये जो रेड चल रहा था, ठीक है, उसमें वो घर पे भी गया, तो ऐसा जा सकता है क्या? दैट इज़ वन क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज कि वो जो डायरेक्टर था वो आंसर दे रहा था, अब कोई चीज़ उसको पता नहीं है या उसको पता है लेकिन डेलिबरेटली उसको जवाब नहीं देना है, क्या वो अपना आंसर रिजर्व करके रख सकता है क्या? सेकंड क्वेश्चन. और तीसरा सीए रिलेटेड है कि अगर मैं उधर जाता हूँ, ठीक है, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, और इन दैट कोर्स कुछ हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है ऑफिसर के साथ, ठीक है, और बाद में ये जैसा वो बोनस लिमिटेड वाला वो बोगस परचेस निकला, ठीक है, अब कोइंसिडेंटली आप उसके ऑडिटर भी हो, ठीक है, तो आपको वो इंटरोगेट कर सकता है और आपका स्टेटमेंट ले सकता है क्या कि आपने क्या वेरीफाई किया, किस बेसिस पे फॉर्मेट किया? ये 3 क्वेश्चन है. ओके. अच्छा, यहाँ पर ले लास्ट 2 क्वेश्चन यहाँ पे दे दो चलेगा. Good evening, sir. Most of the questions has been already raised. Only one question is there regarding the stock. Stock goods can be seized, no issue. But goods which are more than in the books of account, that can be seized, or all the goods can be seized. Because suppose I am doing the trading business, and actually maybe there are certain goods, they are more than what the account is showing. But sometime it happens all the goods are seized. One. Second is, what is the INS 01? Address is mentioned over there. And sometime it happens in practical cases, whatever the name mentioned on the INS 1, that person is not present. Somebody else has come in the that. And I expect, sir, summons regarding, definitely I expect Manish ji and Deepak ji, summons they can issue immediately, because summons has section 50, we must have some time to reply. But in your cases, in practical, they are just keep on doing that. Sure, sure. Good evening, sir. I have a 2-3 question. The first question about I already asked, the witness can be called as per our wish. But I just want to know the practical aspect, how the department take this kind of stand of the assessee to call their own witnesses. Second question is whether as a consultant or a practicing chartered accountant, we can help a client to give this statement, कि statement क्या देना है, क्या नहीं देना है and all. Next question is, when we have seen there is some rectification in the statement which done through pen correction, to the pen, not reprint out, which is allowed as per the law. And no copy of Panchnama was provided before including the search, and they said you can come tomorrow whether it is allowed or not. And the one thing that we had discussed about is CCTV footage, and there's some controversy between going up to both the parties on closure of the CCTV. What is the actual law as on today? And last thing is that I have observed that ma'am have also shared some information to the income tax department during the course of the search. Sharing. Yeah, so whether it is permissible or not, if you can also just highlight as per the GST, because all are the legal questions, is there anything different between GST and income tax search about those questions? Because kind of the same procedure is there. Fine. Thank Last question, just give and then we will start addressing. Hello, sir. They insist for payment under 74. So they can do that? Okay.
Okay, sure. Yeah, fine. Good. I mean, this shows that everybody were attentive very much. And we are happy to take up all these questions. Just on that technical about the reality sector, many developments are there. Taxable or not taxable, this development rights or the redevelopment not taxable and all that. But that's a separate subject itself. Today we focus on the search, the process and the law, right? So for this, the government has issued, now we have say around 40 minutes with us, and we all will be giving some answers. You will get from our deliberations answers and particular questions which we have not addressed. At the end we will take up one by one. Now this, for search, the government has issued many instructions and circulars. It's there on website also, right? It was given in February 21, then in May 22, again in October 22, because the development happens. Some officers are very strict, they take something on their own, and some development takes place, so the instructions are further given, refined, how to go ahead about it. Even in March 24, the instructions for investigation has been given. In all this, there is mentioned about what can be asked, how to be asked, and what should not be asked, or how the process will take on. So from this, I'll give some observations, but you go through all this. The first one is about the authorization. Now, authorization is the search warrant, what we also call it. This is valid and justifiable reasons to be recorded. Now, for what search can be undertaken, my colleagues will answer that. But in search, what is contained, I'll just share about this. INS 1, this is the authorization for inspection or search, right? And in that there is name and address of the person or the company which we want to search, or the place what we want to search. So if we want to search for 4 or 5 companies, all names will be there. Or particular places, address also will be mentioned in that, sir. If something is not mentioned, and if you want to search, we come across something during search, we can call for additional search warrant as well, right? JC is there. JC gave us the permission. JC is also present over at the office. We can call for the additional search warrant also. Now the search, in the search warrant, the contents are very particular, that so-and-so company or a firm or proprietary has suppressed certain transactions of supply, goods or service both. Suppressed certain transactions relating to stock of goods, claimed input tax credit in excess of entitlement or refund excess, or indulge in contravention of the provisions of the Act, rules or so and so, right? Or engaged in transporting the goods, escape the payment of tax, or is an operator, owner of a warehouse or godown, or liable, some goods are liable for confiscation, or documents relevant to the transactions. So for all this, the search can happen. And once the search is, power is given, nothing take, means everything is there. It's not like a show cause notice. When we receive a show cause notice, a tick must be there. If nothing is there, that means the power is for everything. And search power under GST law, there is no difference between survey, search and all that. Under GST law, there is only one section giving power of inspection, search, survey, investigation, everything. For audit, by department, a separate provision. Separate powers. Separately to be tackled. They give first notice and then they come after 15 days, after 1 month. They ask certain details first, they study that and then come. In this search, surprise. Right? Before sunrise, they cannot enter, so they'll wait for sunrise and opening of the company or the shop. And once, say the only peon is there, the
team enters, whosoever is there, they'll show him and then enter. Then let the director come or the person in charge, manager comes, responsible person comes. Again, he has to be shown that. It cannot be said that once to a peon or a clerk or a receptionist, the search warrant is shown, so we cannot show it again and so on. Important is, for a valid search, right persons, the person, the company, then the director of that company should sign, or the manager or the regular employee should sign that yes, he has seen this search warrant and he is allowing us to begin the search, right? So these are all the aspects for the search. Another aspect about DIN, center is using the DIN, but state is not using the DIN. But nowadays, even certain divisions have started using that, and once the DIN is there, you can go for the search. You can say, sir, wait, let me search the DIN. If DIN is not there, you can call up the department also. You can call up the general number, ask the operator to give to the commissioner's office, relevant investigation division, you will be transferred. You can say, is the persons have come? They will say yes or no or so. And because nowadays even there are certain rulings and instructions that fake search are happening. Press notes are there. So be careful, no fake person should come and visit your place. So the so full name and address will be there of a person and place in the search warrant. When the search whether at residence can be undertaken, answer is yes, provided that address is mentioned over there, right? So even residential address can be searched of a person if the team feels that there is some secreted document over there, or some record is there, or some accounts are maintained. As you mentioned about the some case that work from home happens, right? What is the definition of place of business? The place of business is where you keep the stocks. Declared or undeclared place, irrespective of that. It need not be that the place what we is searched should be registered. No. Place of business can be searched, and place of business is the where a person keeps his stocks, where the person keeps his accounting records, and where the person's office is there, right? So if residential address is mentioned as office address, your registration is taken at residence, first person will go to residence and he'll check everything, lockers and everything, and any questions can be asked. And the place where a person visits, anything is found at that place, he is answerable to that. If he says this is not mine, maybe we take it on record, based on that we say give a show cause, raise some demand, he will have to prove that it is not his. But once we find the cheat or a diary or some account recording, laptops, everything will be treated as found from the place. Question can be asked, personal things can be asked. Of course, now people do business on mobiles, messages are there, orders are given. Even when the goods come, invoices, copies are sent. Please make the payment. Of payment made, the message is sent, payment made. All this, is it not part of your record? Answer is yes. Or else you don't keep all anything record on the mobile. It is found even in messages there, send so many kgs of good or so many bags, so many, I mean order is placed. Now it becomes a part of your record. So even that can be searched, copies can be taken, and if objection is there, it can be even confiscated, seized, and then copies can be taken. Or on your own you give. When you go to the residential place, a lady officer's presence over there is must. Here you saw in the act that we said to a gent officer to go, lady was sitting in the office. That's an error. So that can be objected. Why? Because at the residential place, females are there.
So a female attendant will be there who will then question or check, purse check or anything, questions and all that. Right? So a lady officer presence is required. Now who can be the witness? The presence of minimum 2 witnesses are required. We took only 1. Error. There must be minimum 2 witnesses. And who can be that? They should be independent and respectable inhabitants, preferably from the same locality. Right? We cannot take along with us the witness. He should not be known to us. He should not be related to us. From the local, suppose we went to the place of business which is at say Andheri or Bandra, then from local we can call the neighboring office person also. But he should be independent and respectable. Right? Secondly, the moment the team enters the premises, the officers shall show their identification and also they have to offer personal search before the search begins. That these are our bags, you want to check our pockets. Why? Because it should not be that something we have brought in when then we ask question about that. Correct? So this right is there. Whether we ask it or not is different. But you can very well say, sir, I would like to see your bags. But don't take it other way around. With respect. Correct? Secondly, even witnesses personal search has to be offered. Because उसके पास तो कुछ है नहीं ना कि वहाँ पे मिला और बाद में question arise हुआ वहाँ पे. So that also is to be there. Then of this search, a recording is also to be made in the Panchnama. What is the time and of entering the premises for the search? Signature, time and date of person to be searched and the witness be obtained on the body of the search warrant. Right? On the same sheet we have to mention that what time entry took place, who came, witness's signature also. Because that becomes a part of the record of the search. In future it can be produced, it has to be produced before court of law. And then the judge can ask any question based on that either to the department or to the assessor. Then Panchnama. What is Panchnama? Panchnama is a truthful act of proceeding of the search conducted. Personal search offered or not has to be mentioned and the time and date of start as well as conclusion of the search be mentioned. What can be the conclusion of the search? Once the team enters till it leaves is the duration of the search. Correct? Now, can you stop at say your office timing is 6 o'clock or 7 o'clock? Can you stop that? Now you stop it. Answer is yes. Can the officer insist for continuation? Answer is no. If you say no, now stop it. Then what? My colleagues will answer to that. In such scenario, how to tackle, what to be done and all that. Correct? Secondly, video conferencing. Video, not conferencing, video recording. Right? CCTV camera was on. But when from the residence the officer came, we said you switch off that camera. Why? Because we didn't want to be recorded. We want to have some pressure on the businessmen to make the payments, pressurize them, ask some thing which should not be asked and all that. So pressure tactics. So in such a scenario, businessman can say no, continuation of recording. Or there is no camera, you can also insist that I want to record it to avoid the pressure. Secondly, if the team feels that this businessman is a celebrity or a connected person, a big person, he may put us in trouble. We want to record that. So we can say as an officer, we want to record this. And whatever is the recording, maybe on mobile or so, will be a part of the record of the search. Till everything happens, it will be a part of the record. Then personal freedom during the search. Social and religious sentiment of all present be respected.
special care of elderly women and children. Women may be allowed to leave the premises in start if as per their custom they don't appear in public. Meaning thereby, if a lady is a proprietor or partner or director, she may not be allowed to leave the premises. And same way, we cannot stop their prayers what they were doing. Right? We did that. And what happens? All this, if you notice, if something is done which should not have been done, note it down, write a letter, have an acknowledgement. This will help you in further proceedings. Then children be allowed to go to school after examining their bags, medical support be given to needy. Right? Here we said no food also. And the CFO started shouting and all that. How was his act? Yeah. So, during this pressure happens, the person will not be allowed to take food for some time, water for some time, medicine, but that should be it is not a right practice. You can very well object and you can record it also that he did not allow me food and I was not in mental peace of mind, so my answers may be wrong. Later on it will help you. Now seizure of records. Whatever record is to be seized, whether stocks to be seized, right? The seizure happens if the officer feels that liability is there which he may not pay. Liability is so much and much more that he may not be able to pay if the goods are sold. He may not pay. Right? Attachment of bank accounts can happen, provisional attachments can happen, but opportunity has to be granted. Now here, all this has to be mentioned and recorded in the Panchnama. The list of document has to be prepared of the seizure and copy is to be given to the assessee at the same time or later on when asked for, and this fact has to be mentioned in Panchnama. Correct? Now, cash can be seized or not, right? Certain high courts have said yes, it can be seized. It is also nothing but goods. But then the definition says goods excludes money. Right? Some courts have said it cannot be seized. So the matter is now before the Supreme Court and we are awaiting for the decision of Supreme Court in this. Right? Whether gold jewelry can be seized, answer is no, unless the business is of gold and jewelry, because then it becomes a stock. Otherwise, what inventory can be taken, kept on record, cannot be seized by the GST department, but very well the sharing of information can happen. Nowadays, let me tell you that every month or 2 months the meeting is there of all departments. All departments, heads or investigation heads sits together over a lunch or dinner and have this meeting. What cases you have done in last month or last 2 months? What happened? Have you unearthed the unaccounted income or the turnover and all that? So they share all these experiences and information, right? Officially also. So customs, income tax, GST or any other department, they all share the information, and on the other end they have said, they have been told to share the information. Now what is Panchnama? Panchnama, each page has to be signed, annexures to be signed by whom? By officer as well as assessee. And if assessee refuse to sign that, sometimes we say that no, you have written something which is, I have not said or so. Statement is separate. This is I am talking of Panchnama. The recording of the proceedings of the search. So take its photocopy and keep it on record, and if he refuses, you can paste it over that premises. But copy of Panchnama has to be given to the assessee. Then statement
statement, if recorded during the search, is it permissible? Answer is yes. Spot summons can be given to record the statement, or summons may be issued later on also and call in the office to give the statement. Okay? So each page of the statement has to be signed by assessee as well as by officer mentioning before me. So it becomes a part of the record. Up to Supreme Court it can be then preserved and produced when required. So about summons, not to issue summons to top executives like CEO, CFO, GMs, etc. at the initial stages. This is mentioned in the instructions. Right? So spot summons you are given and you say that, sir, give me some time, I'll attend before you and give the statement. You can say so. It's not that you can refuse. But the director is there, he is an MD, he is doing the business, we saw him in the office, he is available, officer may not permit him to leave without giving the statement. So, no repeated summons to a person for personal appearance. Take a detailed statement as far as possible in initial meeting for the first time, right? Then, recovery during search, my friends will tell you about spot recovery, voluntary or what. Then I will just say about the two aspects and then my friends will answer some whatever is further their observations. State and center both have power. Answer is yes. The visit can be made by both the authorities, but once one team visits, the second team waits for that. For the same issue, two visits cannot happen from different authorities. Right? So, the initiator of the visit will conclude all consequential actions like adjudication, rectification, revision, review, appeal, etc. So, he will only issue the show cause notice. Answer this. Opportunity of hearing will be given based on that whatever records are found, whatever the calculations are made, the questions will be put, question on documents, your answer will be taken, maybe in 2-3 sittings and so on. There is no time limit for that, right? And you can also say that I want to give further evidence, but I need time of 1 week, 2 weeks, 3 weeks and so on. So you can ask for the time, answer can be given, opportunity of hearing must be given as principles of natural justice. Else the proceeding will be invalid. So care has to be taken by the investigation team time. The refund, if at all, is there. Suppose extra payment is made and later on in adjudication refund happens, refund will be granted by the nodal officer of that particular person. Last about the arrest. When arrest can happen, my colleague will tell you. But one thing I can share, that personal liberty is constitutional. Arrest only if custodial investigation is necessary or the crime is heinous or possibility to influence the witness or accused may abscond, else arrest is not compulsory. If interpretation issue is there, no arrest. Right? He said, no, this is movable property. ITC is allowable. I have taken rightly. Right? Show cause, answers both ways, and then order can be passed. Speaking orders you can take up in appeal. Right? What next after the search? Show cause will come. If everything is in order, no show cause. Show cause comes. Allegations are there, 3-4. Demands are made. Show cause for penalties also given. Answer properly with proper documentation. Else the case will be weak on your side. Once proper answers given, the assessing officer has to pass a speaking order, and then the demand can be raised, which you can now challenge in appeal,
by paying 10% of the disputed tax. Right? The demand will be 3: tax, interest, penalty. Hearing will be given for everything. Now, for the tax, something you may accept, something you may want to object. So whatever you accept, 100% payment. Whatever you do not want to accept, dispute, pay 10% of the disputed tax amount, not of interest penalty. But if only penalty is levied, tax is no problem, tax was properly paid, but we found something and some penal actions are initiated, penalty order is there. Recently the law is amended. When only penalty order is there, pay 10% of penalty and fight out your matter. Well, I think enough on this. Your further questions, if unanswered, will be answered at end. But my colleagues want to share something about the search, and for that, Sumit. So friends, I'll be touching upon 4 specific aspects: the initiation of the search, situations in which you'll be arrested, summons and the IPC related provisions that we had touched upon, and spot recoveries. So let's come to the first one. अंदर घुस रहे हैं यहाँ पर आपके ऑफिस में. We are getting in. How many of us feel वो सर्च वारंट का कॉपी होना चाहिए, देना चाहिए? खुल के बोलो. We all see as over here. बाकी सबको नहीं चाहिए? सबको चाहिए. क्यों? बिकॉज वो सर्च वारंट आपके नाम पे इशू हुआ है तो मेरे पास तो कॉपी होनी चाहिए. करेक्ट? और समवन हैज अ डिफरेंट रीजन. मेरे अगेंस्ट एक्शन हो रहा है, टैक्स पे अगेंस्ट एक्शन हो रहा है, तो मुझे कॉपी मिलनी चाहिए. दैट्स द बेसिक ऑब्वियस फंडामेंटल दैट वी हैव. बट फ्रेंड्स, इफ वी लुक एट दिस फॉर्म INS 1 वेरी क्लोजली, it is not issued to the taxpayer. It is issued to the officer who has been authorized to conduct a search or inspection. That I, the so-and-so joint commissioner, whosoever, what is designation, have the reason to believe that so-and-so things have happened, and hereby I am authorizing you, let's say my deputy commissioner or the assistant commissioner or the superintendent or the inspector, whosoever the designation may be, I am authorizing you to go over there, inspect, to go over there, search, and if need be, seize. The name, address, GSTN of the person to be searched is mentioned on the search warrant, but the warrant is issued to the authorizing officer. आपको रास्ते पे सिग्नल पे हवलदार पकड़ता है तो आप अपने लाइसेंस का ज़ेरॉक्स देते हो उसको या लाइसेंस दिखा के वापस लेते हो? You have been permitted to drive a vehicle, so he checks whether you're permitted, do you have the proper validity to drive the vehicle or not. That is what the taxpayer is supposed to do. I have to check the identity. Yes, ये genuine आदमी है पहले तो, सबसे first thing. The officers are genuine. Second, he has been authorized. And authorized by the right person. Not below the rank of joint commissioner. So tomorrow if joint commissioner JC सर साथ में मेरे साथ आ रहे थे, बोले मैं तो खुद ही अथॉरिटी हूँ, यहीं पे इशू कर देता खुद के नाम पे INS 1 form, चलेगा? He issues the INS 1 form in his own name. No. He has to authorize someone else. If he wants to search, he has to get the authority from the commissioner. The central tax officer, not below the rank of joint commissioner, has to authorize any other officer of central tax or state tax as the case may be. So someone has authorized this person to go over there, conduct an inspection, search and seizure. That is why you are not given those copies. I have shown you my authority to come in your premises, search, seize and leave. Now what has happened over there? The copy of Panchnama has to be mandatorily given, as Deepak sir mentioned. Why? Because normally during a search, certain documents will be seized. What documents are seized is contained in the Panchnama. वहाँ पर कुछ मिला है, जो भी चीज़ मिली है वो पंचनामा रिकॉर्डेड है, एंड पंचनामा विटनेस के साथ साथ टैक्स पेयर का भी सिग्नेचर्स आते हैं.
so that he cannot later disagree कि ये नहीं हुआ था, मैंने कब agree किया है. So whosoever was the person in charge of the premises, उनका भी signature आ जाए पंचनामा में. Now once we enter, reason to believe, sir क्यों आए हो यहाँ पर भाई, किस खुशी में आ गए? So how many feel कि बताना चाहिए भाई क्यों आए हो, क्यों परेशान कर रहे हो, इतना टैक्स तो भर दिया, ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ पर मंथ का कलेक्शन हो गया है. So the officer should inform, right? Anyone agrees? No. बता दिया तो आगे सर्च एंड स्टेटमेंट में वो टैक्स पेयर उसके बियॉन्ड आंसर्स देगा. I had one information, maybe I had two informations on basis of which the search was conducted. But is it a possibility कि third भी कुछ मिले evasion वहाँ पर? Is it a possibility कुछ fourth evasion भी मिले? अगर वो पहले आपको एक रीजन दो रीजन बता दिया है, कुछ नहीं मिला, लेट्स से आप जैसे बताया, आई थिंक सम पीपल मेंशन्ड, वो पॉइंट नहीं मिला तो वो सर्च का रिकवरी पूरा करने के लिए कुछ और पॉइंट्स करते रहते हैं. व्हाट विल योर आर्ग्यूमेंट बी? सर वो तो नहीं मिला, आप जाओ यहाँ से, योर सर्च इज इलीगल. दिस इज व्हाई द रीजन टू बिलीव needs to be there with the authorizing officer, not in his mind but in the department's file recorded. What was the reason to believe? And reason to believe is different from reason to suspect. Suspicion is different, belief is different. मुझे doubt है, that's one part. But when I've got some corroborating evidence to support my doubts, support my suspicions, then it can become a belief. सारे corroborated evidence है तो search करेगा क्यों आदमी? कुछ आए हैं हाथ में, बाकी सब चीज निकालने आपके पास आए हैं. आपके पास in the sense tax payer के पास आए हैं. The reason to believe needs to be there in the file, and in cases where the taxpayer has challenged the validity of the search, stating there was no reason to believe for you to enter the premises, the revenue was forced to share the reason to believe with the court in a sealed cover. For the court to examine कि reason to believe genuine था, made up है, pre-recorded है, backdated है, क्या है ये? The courts can inspect that. But we as taxpayers may not have the authority to ask for that. After a couple of days when they don't find something, that is when they might share it out of courtesy of friendship, whatever you may call it, but not legally obliged to. सेकेंड पार्ट, अंदर आने के बाद 10 बार धमकी दे दी, आलोक भाई आपको अरेस्ट करता हूँ, इनके नाम में मेमो बनाओ, इनके घर पे जाओ. Pressure tactics commonly used, we all know. But let us understand the situations in which you can be arrested on the spot. There are 4 situations and 4 only on which you can be arrested on the spot. Point 1. You have made a supply of goods, service or both, but not issued the invoice. टैक्स पेयर की भाषा में अगर कॉमन लैंग्वेज यूज करो तो ब्लैक का काम किया है. यू हैव मेड द सप्लाई बट नॉट इशूड द इनवॉइस. सो व्हाट द इंडस्ट्री टर्मिनोलॉजी इज, ब्लैक में काम किया है. सेकेंड, यू हैव इशूड द इनवॉइस बट नॉट मेड द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. सो इंडस्ट्री टर्मिनोलॉजी, फेक इनवॉइस इशू किया है. द थर्ड, आई हैव क्लेम्ड ITC but never received the supply. I've claimed ITC on basis of an invoice, but not received the supply of goods or services. Industry terminology, fake ITC, what we call. The fourth one, I have collected the tax, not charged, collected it. After charging, collect bhi kiya hai. After collection, failed to pay it for more than 3 months. In these 4 situations, 1, supply, no invoice, black card transaction. Second, invoice but no supply, fake invoice. Third, claimed ITC but no supply, fake ITC. Fourth, collected tax but failed to pay it for more than 3 months. In these 4 situations only, if your tax amount evaded, only tax, not the interest, not the penalty, not the late fee, tax amount, if it is exceeding 2 crore, you can be arrested on the spot. But in between 2 crore to 5 crore,
It's a non-cognizable and bailable offense. The arrested person can demand bail as a matter of right. मतलब ये नहीं है अरेस्ट किया सर मुझे बेल दो मुझे राइट है, बेल बॉन्ड देना पड़ेगा, प्रोसीजर करना पड़ेगा, पेपर वर्क. Once it exceeds 5 crores, it's a cognizable and non-bailable offense. By the term non-bailable, it does not mean कि आपको bail नहीं मिलेगी, मिलेगी magistrate के पास. You'll get the bail in the magistrate's court. The problem that comes into play is that no matter how genuine your transaction is, for positive time we didn't touch upon the topic in the act, but at the end if you noticed, सारे vendors, सारे debtors का list निकालो, check करो कोई ab initio cancel हुआ है GST number. Just because the supplier's GST is cancelled, just because customer's GST is cancelled, a wild presumption can be made. That is a fake transaction. And God forbid if the tax amount exceeds 5 crore, भरो नहीं तो arrest करेंगे. Let's say a similar situation arose over here for bogus. What did the tax head do deftly? 10 करोड़ का टैक्स इवेशन था, whether he agreed or disagreed. बाकी सब पे जवाब देंगे, यहाँ पर जाके चुपचाप 6 करोड़ भर दिया, तो अरेस्ट भी किया तो बेल तो मिल जाएगी. आज रात को बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर पाया तो कल तो कर लूंगा, कल नहीं कर पाया तो मंडे तो निकल जाऊंगा बाहर. Brought down the demand amount to 4 crore from 10 crore. Very deftly managed by the tax heads and the taxpayer. Barring these 4 situations, black, fake invoice, fake ITC and collected but not paid taxes, 5th situation नहीं है सर. 17(5) का इशू आपका 50 crores का होने दो, अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. रूल 28 का इशू आपका 20 crores का होने दो, इशू अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, because these are all matters of interpretation of the law. Yes, there will be interpretation in case of fake allegations as well, but over there are evidences to support the claim for these 4 situations. Now, after the arrest, we are coming to one part of the summons. एक question आया था that can summons be issued for the same day appearance? If it is possible for you to attend, if it's issued, let's say 10 in the morning, delivered to you at 11 in the morning, and asked you to present at 4 in the evening, I think within the same city you can travel, unless until you are outstation. During the search, a spot summons, you're already there, a spot summons can definitely be issued. While the search is being conducted, a spot summons is definitely being issued because you're already there. आपका statement record करने के लिए. But otherwise also, since a question came, I'm just telling you, if it is possible for you to be present. Normally, if it is being delivered by hand or by post or by whatever other modes, normally 1 दिन 2 दिन के बाद का रहेगा, because otherwise the taxpayer will get an valid excuse that the summons was not received by me on time and hence I could not be present on time. So you're requested to give me another date. That's why normally for future presence they issue with a future date. Now, once the summons are issued, your statement is being recorded under section 70. One thing, statement किसी का भी record होगा, director का भी होगा, tax head का भी हो सकता है, employees का भी हो सकता है, जो CM वहाँ present है उनका भी हो सकता है. The term used in section 70 is any person. Even the customer statement can be recorded, even the supplier statement can be recorded. We have got cases even when the software vendor was summoned. Why? Because company was maintaining its accounting in some software 3 years, 4 years back. वो सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन तो कुछ किया नहीं, बंद हो गया, मैंने भी कंपनी वाइंड अप कर दी, बट अब वो सॉफ्टवेयर एक्सेस नहीं हो रहा है, तो सॉफ्टवेयर के वेंडर को समन कर बुला डेली, आप वहाँ पर अगर स्टेटमेंट दो ये कैसे एक्सेस होगा. एनी पर्सन कैन बी समन्ड. Power is to any person, but any relevant person again. Now once you are summoned, once the statement is being recorded, if you are giving a false statement, misleading statement, any false evidence, whether there is tax evasion or not,
as soon as you give a false statement, especially intentionally, it's a punishable offense under section 229 of Bharatiya Nyaya Sanhita, earlier 193 of IPC, punishable with a jail term of up to 7 years. Basically, it is equivalent to lying in the court. कोर्ट में जो स्टेटमेंट देते, गवाही देते हैं, वहाँ पर झूठ बोला तो जो सज़ा होती है, ये स्टेटमेंट की वही है. स्टेटमेंट कुछ गलत बोला. So this was basically to answer a question that was raised, can the answers be reserved? So when I ask a question over there and you say, I do not know, and the officers get hold of evidence that you were aware of this thing, then that your I do not know was a false statement. Wherever you are not sure, to the best of my knowledge, to the best of my belief, to the best what I can remember, if it's an old transaction. But these things should not be used repetitively, otherwise they also get to know ye non-cooperative hai. Then the taxpayer should not expect the revenue to be cooperative with them. Sir, chodo na, jaane do na. Don't expect that. While the statement is being recorded, intentionally insulting or interrupting the presiding officer is also a punishable offense. Section 267 of Bharatiya Nyaya Sanhita, earlier 228 of IPC, with a jail term of 6 months, up to 6 months. Bailable offense है, इसलिए tax head उनको सम्मान नहीं दिया था, फिर भी जितना हो सके बीच-बीच में help कर देते थे. Presiding officer गुस्सा हो गया, सर sorry sir, आप continue करो. And while statement is being recorded, your advocate or CA cannot be present with you over there legally. He can be at a visible distance but not at an audible distance. सुनेगा तो हाँ ना कुछ तो उतना हम मैनेज कर ही लेते हैं. उतने स्मार्ट तो हम हो गए, स्ट्रीट स्मार्ट. That's why he can only be at visible distance, just to ensure that you are not being physically coerced, physically pressured. Spot recovery is the fourth aspect. No spot recovery is to be done. We have seen the instruction sir ne bataya hai. Why? How many of you know why that instruction for no spot recovery was come into picture? क्यों आया वो instruction? Anyone? जोर जबरदस्ती रिकवर किया गया, इच्छा के विरुद्ध रिकवर किया गया, वो सब तो कॉमन हो गया सर. I am talking about extreme cases where the taxpayers were harassed to this extent for recovery on the spot that the taxpayer attempted suicide the next day. इंस्ट्रक्शन आए कि आप स्पॉट पे मत करो, बाद में रिकवर, आपके जाने के बाद सर्च खत्म होने के बाद रिकवरी होनी चाहिए. So if you have seen the literal interpretation, जो CCTV के लिए CCTV चालू रहेगा, हार्ड डिस्क निकाल लेना. So in one instance what happened? Search खत्म हो गई. Search ended. The next day the tax officers logged in on the portal, created challan. आपका बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड ले लिया है. And they called up OTP दो. The taxpayer was even more smarter. He recorded the entire conversation, presented in the court, filed a criminal case. So, no spot recoveries can be done. Period. That is the end of story. If you're not paying on the spot, at least for these 4 cases where you can be arrested, then definitely वो आपको अरेस्ट करके लेके जाएंगे. स्ट्रेट पॉइंट उनके लिए रेट सक्सेस करना है, या तो अरेस्ट करो या रिकवर करो. For other interpretation matters, no spot recovery is nothing doing. You will be threatened with a lot of things. Arrest करेंगे, attach करेंगे, ये होगा, वो होगा. Creditors को लेटर लिखेंगे, डेटर्स को लेटर लिखेंगे. सर उस पर बैक डेटिंग भी जो होगी, वो लेटर का बैक डेट होगा, दिन का बैक डेट नहीं होगा. दिन आप सर्च करोगे, दिन का इश्यूंस डेट मिल जाएगा. एंड वो सेम दिन बैक डेट इशू किया हुआ दिन अगर वापस इशू किया है किसी को, इफ आई वाज इन टैक्सपेयर्स पोजीशन सर, आई वुड सिंपली फाइल अ केस इन द कोर्ट. आई हैव गॉट एविडेंस विदाउट दिन वो इशू किया है लेटर, उसके बाद दिन बैक डेट जनरेट किया है.
वी आर फाइटिंग सर. वो बैक डेटिंग सब पॉसिबिलिटी नहीं है अब करने के लिए. जो कर रहे हैं दे आर डूइंग एट देयर ओन रिस्क. सेम गोज फॉर द इनवॉइसिंग पार्ट. सर बैक डेटिंग जो भी जिसको करना है एट योर ओन रिस्क. It is not legally permitted, not advised, nothing. For your own business needs, someone is doing, that's their call. But not legally permitted, simple as that. Cash teaser, I think sir has already told. Jewelry, I think someone had raised a question on the jewelry part. Jewelry was checked. If you were a jeweler, then that would have been a stock. I think you have covered the jewelry. Okay, all right, fine. So that takes us through the authorization, search, summons, spot recoveries. Sir, Manish, I'll request you to take some points from taxpayers' point and other things, whatever left. Thank you, Sumit. So, now coming from the taxpayer point of view or a consultant point of view, what precautions and everything you have to take. The first is starting with the statement. You have seen in the script that they are saying 8-page statement is there and you read in 2 minutes and sign. What should, as an SSC should do in this scenario? क्या करना चाहिए? साइन करना चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए, फिर से पढ़ना चाहिए, फिर उसको समझना चाहिए और फिर साइन करना चाहिए. So take your own time. Whatever pressure they will put, do not come under the pressure. आपने देखा कि आलोक भाई ने 55 करोड़ का 5.5 करोड़ करवा दिया, नहीं तो अदरवाइज इट विल गो अगेंस्ट मी. करेक्ट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरा है, somebody has asked a question of retractment of statement. SSC always has a right to retract the statement because हम कितना भी बात करें, कुछ भी करें, अंडर प्रेशर हमको कुछ ना कुछ लिख के देना पड़ता है एज एन SSC. So at the first given opportunity you should retract the statement. ऐसा नहीं कि 3 महीने के 6 महीने के बाद आप जाके retract करते हो. That court will not accept and court will say it is afterthought. Correct? तो retract करने के लिए सबसे important क्या चीज़ है? सबसे पहले statement की कॉपी आपको दी नहीं जाएगी. Correct? दीपक भाई ने बताया. Correct? So it will be given maybe at the time of show cause only, once if it will be issued. If it will not be issued तो वो भी नहीं मिलेगी आपको. So आपको क्या करना है? सुबह के 4 बजे, 5 बजे, 2 बजे, कुछ भी है, आप बैठिए और आपने क्या स्टेटमेंट, उसने क्या क्वेश्चन पूछा, क्या स्टेटमेंट दिया, आप उसको पेपर पे नोट करिए बिफोर गोइंग टू योर रेसिडेंस. बिकॉज दूसरे दिन सुबह उठ के आएंगे तो कितना याद होगा? 60%, 70%. करेक्ट? और 2 दिन के बाद रिकॉर्ड करेंगे तो 40%. और जिस टाइम पे स्टेटमेंट आपके हाथ में आएगा तब तक तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा. करेक्ट? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो मे बी नेक्स्ट डे और मे बी विद इन 2-3 days यू शुड रिट्रैक्ट. और रिट्रैक्ट ऐसा नहीं कि मैंने पूरा स्टेटमेंट ही रिट्रैक्ट कर दिया, बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर नॉट इनकरेक्ट. So you give the reason and you give the correct thing, और you say कि भाई मेरे को प्रेशर में ये लिखवाया गया है या मैंने ये गलत, ये मुझे पता नहीं था फिर भी मैंने ये कहा है, this is not the correct thing, this is the correct thing. So to that extent I retract the statement. That what you have to do. Second is, what should be the timings of the search? This is not income tax search, this is GST search. Officially, it should start on or after your office hour will start, and it should conclude not later than your office hours should end. So कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा, किस स्टाफ को रुकना है, कौन से डेजिग्नेशन का आदमी रुकना चाहिए, कौन सा जाना चाहिए, किसको रोक सकते हैं. सो लीगली अगर आपका ऑफिस का टाइम 10 से 6 है, 6 o'clock you have to close your office. If your search has not been concluded, then they will seize your office premises, or maybe they will keep everything in one cabin and they can seize that cabin, depend on the situation. Correct?
So they cannot go beyond 6, or if your working hour is up to 7, so they can't go beyond 7. They can come 3 days, 4 days, 5 days, 6 days. वो continuous आ सकते हैं, उसमें कहीं कोई restriction नहीं है. But you can insist कि sir, now this is a GST search, you come again tomorrow. So no statement at odd hours. Already सुमित ने बता दिया, समन या कोई भी डॉक्यूमेंट है दिन होना चाहिए, बैक डेटिंग पॉसिबल नहीं है. ये सब जो पास्ट में हो गया ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी दिन. State government as of now not using DIN, but sooner or later they will also start using the DIN. Then you can verify on the portal also. दीपक भाई ने ऑलरेडी बता दिया है कि सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, उनको वो रोक नहीं सकते हैं. मेडिसिन्स खाने के लिए, पानी के लिए, दे कांट स्टॉप एनीवन. टाइम टू टाइम हर आदमी को खाना वगैरह मिलना ही चाहिए ड्यूरिंग द सर्च. SSC always has a right to produce any fact or figures if he is not aware about that. So it is not necessary कि हर चीज़ का आपको हर समय पता ही होगा. You can say I will get back. आपने देखा, इन्होंने बताया valuation aspect. I told Rule 28, correct? Then what I said, okay sir, I will explain this in writing after 7 days, correct? So that what you have to put in your statement. So this is very important. Then work from home. Definitely you can do work from home, but you have to register some premises. आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा कोई प्रीमाइसेस ही नहीं है बिजनेस का, उस प्रीमाइसेस पे दे कैन कम. आई थिंक सर्च कौन से प्रीमाइसेस में हो सकता है, दैट ऑलरेडी डिस्कस्ड दीपक भाई. सो आई एम नॉट गोइंग, होम पे भी, घर पे भी जा सकते हैं, सब ऑलरेडी यू हैव डिस्कस्ड. सो दे कैन टेक द स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्टर. इफ डायरेक्टर इज नॉट प्रेजेंट, दे मे इंसिस्ट, बट इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर डायरेक्टर टू कम, मे बी डायरेक्टर मे बी आउट स्टेशन. So later on also they can call them for summon. WIRC में है या एक ही प्रीमाइसेस में आपके 5 कंपनियां ऑपरेट हो रही है. मेरे को INS 1 जो है खाली एक ही कंपनी के लिए आया है. Can they check another companies also within the same premises? Or sister concerns sitting in different premises, can they go? Answer is yes or no? No. Clear cut no. जब आपने देखा कि सुमित गए थे रेड्डी सर के पास परमिशन लेने के लिए, तो उन्होंने एक उनको डायलॉग कहा था कि सर मुझे कुछ भी और चाहिएगा तो विल यू बी अवेलेबल, करेक्ट? सो जो प्रीमाइसेस INS 1 में लिखे हैं और जो कंपनी INS 1 में लिखी है उसके बियॉन्ड दे कैन नॉट गो. अगर उनको जाना है तो देन डिफरेंट INS 1 लगेगा, एंड देयर हैज टू बी रीजन टू बिलीव, हैज टू बी देयर इन द फाइल बिफोर इशुएंस ऑफ INS 1. सो अगर आपके प्रीमाइसेस में आए हैं, यू कैन स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट देम नॉट टू सी अनदर कंपनीज डॉक्यूमेंट, provided if some transactions are related to that. जैसे कि झोलझाल एंड कंपनी, और आपने देखा होगा इस स्क्रिप्ट में देयर वाज वन ट्रांजैक्शन. सो रिलेटेड टू दैट ट्रांजैक्शन दे कैन डिस्कस विद झोलझाल, अदरवाइज नो. देन दे हैव टू टेक अनदर INS 1. सेम थिंग इफ ऑफिस लाइक WIRC और शेयर्ड स्पेस दूसरे किसी कंपनी को नहीं चेक कर सकते हैं अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. देन एक बार मेरा सर्च हो गया, उसका कंक्लूड कब तक करना है? एक वंस दे वेंट फ्रॉम माय प्रीमाइसेस, देन नेक्स्ट स्टेप इज टू डिग आउट अनदर इंफॉर्मेशन इफ दे वांट. देन नेक्स्ट स्टेप इज टू इशू शो कॉज नोटिस. फॉर इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस द टाइम लिमिट इज गिवन इन सेक्शन 73, 74 for the past period,
for the current period. Now it will be 74A. So whatever may be the time period, उसके पहले ही उसको conclude, उसको show cause issue करना है और उसका order issue करना है. They can't go beyond that. Now, presence of lawyer and CA. I think already Sumit has covered कि legally not permitted, but अगर ऑफिसर की मर्जी है वो अलाउ कर सकता है कि आपके बाजू में भी बैठे, but definitely he will not appreciate that the lawyer or the CA will prompt anything. आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आलोक was prompting me on one transaction, so immediately he raised an objection. Correct? So lawyer और एडवोकेट भी कोई चीज़ के लिए प्रॉम्प्ट नहीं कर सकते, कोई चीज़ के लिए मुझे बता नहीं सकते बिजनेसमैन को. एंड सर्च का पर्पस एक ही होता है और सिर्फ एक ही होता है, टू फाइंड आउट द फैक्ट. एंड द बिजनेसमैन, एसएससी और देयर एम्प्लॉयज आर द बेस्ट पर्सन to give the fact. Being a chartered accountant, we are not aware of any fact about the companies, how they are running a business, how their operations are happening, how they are selling the goods, how they are recovering the money. Correct? Are we in a position? So as a chartered accountant, as a consultant, we should avoid giving any statement on behalf of our client unless specifically the search is the summon has been issued in the name of chartered accountant. वो एसएससी का काम है, एसएससी को ही करने दो. मैंने देखा है कई बार बोलते हैं एसएससी को पता नहीं है, इसके लिए मैंने दे दिया. कई सीए भाई आके बताते हैं. But never give any statement. Personal password, already I think Sumit has covered. बैंक का ट्रांजैक्शन का आईडी वगैरह आपको देने की ज़रूरत नहीं है. जीएसटीएन का आईडी वगैरह देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो डायरेक्टली पोर्टल से वैसे भी ले सकता है. कैन दे गो टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस? Yes or no? Yes? No. The answer is no. He can go only to the premises what has been mentioned in the search warrant or INS 1. There may be a possibility that SSC may say कि मैंने accounting outsource करके रखा हुआ है धर्मेश जी को. करेक्ट धर्मेश जी? सो वो कहता है कि मैंने धर्मेश जी को अकाउंटिंग आउटसोर्स करके रखा है, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको उनसे ही मिलेगी. देन डेफिनेटली दे कैन गो फॉर टेक अनदर INS 1 एंड दे कैन गो टू द धर्मेश जी's premises. और मे बी एसएससी सेज कि नहीं, मेरे जो भी बिजनेस डॉक्यूमेंट है फॉर द पर्पज ऑफ सेफ्टी आई एम कीपिंग इन द चार्टर्ड अकाउंटेंट premises. देन दे कैन गो. अब धर्मेश जी के ऑफिस में तो वो 500 क्लाइंट का काम कर रहे हैं अकाउंटिंग का, बराबर ना सर? कि ज़्यादा होगा मुझे नहीं पता. सो मे बी 500 होंगे, 100 होंगे. सो क्या दूसरे क्लाइंट का देख सकते हैं? आंसर इज नो. सिंपली हैज टू बी स्ट्रिक्टली से नो. दे कैन गो एंड dig into that premises, that client's document only. I think मेरा सब कवर हो गया ना धीरज? So now I request Dhiraj to cover the balance thing. Dhiraj and Bijal. What is CA's office? Can it be additional place of business? Then whether you can be auditor, because auditor has to be independent. That also you have to keep in mind. An additional place जहाँ पे आप business कर रहे हैं, तो CA के office से आप business कर रहे हैं, so then whether you are a shared premises, then you have to see the institute code of conduct, whether it is permissible, and then you should take a call. कि कहीं ऐसा नहीं हो कि KCC को help करने गए और आपका ही suspension आ गया.
And at least when you are sitting in an institute premises, do not ask these questions. Hello, good evening. Now somebody has asked for the section under section 74 is valid or not. So if you are doing any bogus purchases, if they found that suspension and fraud is there, they can levy section 74. It is permissible, they can go with that. Otherwise, if you feel that it is not section 74, bogus purchase nahi kiya hai, we have shown the documentary evidence and everything. Just because the third party ke wahan pe rate gira aur uska naam apne yahan pe aaya, so you can very well go with section 73. They cannot go with the section 74. Then accounts are not updated. Like I told you that we have not updated accounts. It is permissible or not. That we have told that account that has gone to the with marriage and all these things. So 2-3 महीने का account update नहीं होता है. So that is not permissible. Your account has to be reasonably updated and all these things. 4-5 दिन का रह गया, 7 दिन का ठीक है. Some valid excuse, but otherwise account has to be keep updated and all. Try to get the account updated. And some statement you have given wrongly. Say for example, now you feel that there some statement has been given wrongly and you want to rectify the statement and all, some PAN number and all. So immediately you can give the letter of authority and then you can give the letter and say that this statement has wrongly been submitted, but not after the 1 year or 3 months or 4 months, not more time gap and all these things. Okay, reasonable things has to be given. Reasonable has to be defined that immediately whatever you feel things and all. Okay, this is what I want to cover. Rest of thing I want to cover, but my businessman is so smart, he has covered everything and all. So I'm handing over to the department guys. So one of the question. So one of the question is asked, what is the implication for not adding additional place of business in GST registration? So guys, we are attending and addressing cases where businessman in Maharashtra purchased goods from Gujarat. Bill to address is Mumbai and ship to address is Bhiwandi. That Bhiwandi godown address is not amended in businessman of Maharashtra. The Gujarat officer in between the transit ट्रक को रोक दिया और बोल दिया कि आप जहाँ गुड्स मूवमेंट कर रहे हो वो प्लेस आपका एडिशनल प्लेस नहीं है. सो यू आर मूविंग गुड्स टू द प्लेस विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, सो यू आर एंगेज इन हवाला डीलर्स. एंड अकॉर्डिंगली ऑर्डर पास कर दिया गुजरात का GST नंबर दे के. सो दिस एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस amending on the GST certificate is vital. Wherever you face any discrepancy with the department notice, kindly address it and get it done. It is very important. Another question is, in Panchanama, So as Dhiraj has said that the premises from where you are carrying on business, storing your goods need to be registered. But there is one circular also, circular number, but in this case, उसने already कोशिश किया है, but register नहीं हुआ है. Then your answer may change, and then again there is a circular number 241. You can take the benefit of that. It is very relevant to this question. I welcome Preeti Savla and Bishan Bhai both. Yeah. Another question is, in Panchanama, the diary and loose paper which are received from the client place is not recorded in Panchanama. So it's good that something is discovered from your place which is not mentioned in the Panchanama. You should happy, not to answer, not to question. That's it. One question was that commodity which is not allowed to deal with, but they are dealing in that commodity. So here it is something, it is travel beyond GST. So GST department is not going to ask whether you are allowed to deal with this commodity or not, but whatever commodity you are dealing with, the same should be part of your registration certificate. If it's not, you have to update as and when time required. One question was regarding the provisional entries, the taxation impact, the demand on provisional entries. So provisional entries only provision, there is no actual supply is happening. Okay,
So there is, and the provisions are done only for the purpose of maybe say for giving the provisional trial balance or something, but there is no supply, so there cannot be any tax demand. One question was on multiple tally backup when it is found at the server. Usually we keep the backups. One backup is there with us or one with the client. So at the end you have to prove that which is your final version, what is the final books of accounts. If they are finding multiple accounts and there is huge variation in the entries or adjustment, then of course you are liable to give clarification on that. Yeah, almost 48 questions were there, which we have almost answered. If something is left out or time permits, we can. Okay, even offline you can ask us, right? I mean, when we just come down. Well, our team is thankful to the Institute, WIRC, for giving us this opportunity. We have tried our best to perform in a simpler way and explain the provisions of the search under the GST law. Thank you. Thank you very much, sir. Ma'am, please, if you can. So, hello friends, and thank you, Bishan Bhai. And as regards to Bishan Bhai, I am seeing since the time this new regional council has been, regional council members have been elected and the council has been formed, the best of the programs on GST are being conducted, and all credit goes to Bishan Bhai. So congratulations. And do these initiatives, because earlier we had Manish Bhai in the regional council, and he used to drive this entire GST, right? So now that has been taken care by Bishan Bhai. And I can see, yes. Exactly, that's what, whatever I am seeing the WRC programs, GST actually doing well, GST committee. So also share all your suggestions, what all much required in GST, so that that can be taken care by Bishan Bhai, and that panel is also there for whatever issues are there. So take benefit of that also. And I can see the stalwarts on the dais, everyone, the name in GST. So thank you everyone for being part of this initiative. And I have seen that whenever all, like whether Deepak Bhai, Aalok Bhai, or anyone we call, they are always available to share their experiences, share their knowledge. So thank you. And GST now litigation is now the thing which have already started, and we have very few members who are into litigation. And search is the next level. That's what, that is the next level. So that awareness is also required. So compliments to Bishan Bhai, GST committee, and compliments to all the stalwarts present over here, and all of you also. So Manish Bhai, once again, thank you so much. Your legacy, we are following and we are just taking it forward. Thank you, Preeti ma'am, for being here. And so since you are here, you are always helpful to all of us. So far as the members' concerns are concerned, ma'am, thank you very much. Thanks Sumit Bhai, Deepak sir, Aalok Bhai, and all other faculties for guiding us, and members who are taking participation, active participation, and let us, I can say, explode to the new opportunities which are knocking our door. So on 10th of May also, we are going to have a mock tribunal. So I request all to also join in that program. Today we had a GST committee meeting as well, and we have suggestions from the members. We'll try to do that as well. And if you are interested in doing and contributing in GST committee, I request you to please do write to us, and we will definitely going to take it forward. Ma'am, as you have suggested, we will try to make our ICI more vibrant, and will reach to a new height. Thank you very much.